Today is the 13th of October 2022. Here is Mangesh Naneshwar Bolkar sir, Director to Sambodhi IAS Academy, Mumbai THANE. Very soon we are opening at Pune and if possible at Nagpur also. So on today we are having our very nice faculty for UPSC Civil Services examination. Shree. He has been associated with Sambodhi IAS Academy since more than 4 years. And before pandemic, he taught at our Vidyavihar branch, Thane East branch. And in pandemic period, he continued through online media on the platform of Sambodhi IAS Academy. He is having experience of UPSC Civil Services Mains Examination, State Services Mains Examination and interview. And whatever subject he teach at Sambodhi, earlier he taught economics subject and few other topics also. Just recently also he appeared for Civil Services Mains Examination. And I am very much hopeful for his positive result in the coming examination, in his examination. So specifically, this session is organized to discuss those questions of recently conducted UPSC Civil Services Mains Examination. Specifically, questions are associated with paper 2 and paper 3, constitution, governance, international relations, internal security, disaster management, science and technology. So what Shree is doing today, he is going to give you approach with respect to the questions which have been asked by UPSC in recent examination, right? Just recently, MPSC also updated its syllabus, and the entire syllabus of MPSC State Services examination is at UPSC level. Mains is totally change of MPSC State Services examination. So those who are eyeing for targeting State Services examination also, so this session will definitely help all those students, those who are preparing for UPSC Civil Services and MPSC State Services examination. Okay. So without wasting time, I am now it's over to you, Shree. Earlier, already I have discussed syllabus, each and everything with all of you. So I don't think that you are not aware about the syllabus at the prelims and the mains level. All of you are aware about the syllabus. So Shree is basically going to discuss this year questions, earlier asked questions also, and our main focus is on how to deal with those questions. What should be our basic approach and advanced approach, okay, with respect to writing of mains examination and specifically paper 2 and paper 3, and how to try our best, okay, how to prepare at the best level to fetch maximum marks at mains level, because mains is ultimately very important examination. If you fail to secure best possible marks at the mains examination, you are not getting a call of interview. Okay, so mains is the best. Mains is the most important part of this entire UPSC and MPSC State Services preparation. Okay, so just thank you once again. I welcome Shree on the behalf of Sambodhi Career Academy, and now over to you, Shree. तुम्ही start करू शकता. Thank you, sir. Good evening, all. You are all welcome in Sambodhi Academy. So today we will discuss the previous questions and how to approach
those questions in UPSC mains examination. We are going to see GS2 and as well as GS3. Okay, we will see selected questions. Okay, so you guys can get some basic idea what to study and what to write in those 150 words. Okay, basically, how many of you have given the prelims? I mean, approximately, at least prelims. At least 10 of you. Sir, I have given. Okay, so okay, that is fine. So basically, if you have gone through the syllabus, okay, we will study now. We will start with GS2. Okay, so what if we look at the GS2 syllabus, what it says? Okay, basically, when first we come to know about what constitution, okay, or let's say Lakshmikant, okay, but we fail to recognize that for the prelims Lakshmikant, we think Lakshmikant is important, but it is equally important for GS2 mains also, because around 125 marks will be from your basic knowledge about the constitution, how federal system works, how various constitutional offices such as president, vice president, or let's say governor, okay, those offices, what is their mandate and how they are working. So you must know the framework, decided framework in the constitution, as well as practical working of these offices in the Indian political system. For example, even if we say governor is for, let's say, smooth functioning of the state government and the central government, but in practical scenario, what happens? So based on those, you can write those questions. For example, in this mains, what they ask, how many of you have gone through the, question paper of the GS2? Okay, what it says? There was one question on president, okay, vice president, sorry, okay, what is his mandate and how it functions. Okay, all सबको आवाज आ रही है ठीक से, or anybody has any problem? Sir. Okay, ठीक है. Yes, sir. Okay, so what, let's you guys also give your feedback, okay, because when you will do mistake or when you recognize that okay my point was right, then you will feel confident in both ways, by doing mistake and as well as when you will be right. So simple, so again, all you know that there will be 20 questions, 10 question for 150 words, okay, and 10 questions for 250 words, okay. सबको ये पता है ना, 10 क्वेश्चन को सिर्फ 150 वर्ड्स में लिखना है, उनको 10 मार्क रहेंगे, और बाकी के 10 क्वेश्चंस को you will have 250 words limits and marks will be 15 marks. Okay, so I won't go into the technicalities, we will save time. So there was one question, discuss, I will switch to the whiteboard, but let's for one question we will discuss through the video only. Discuss the role of the Vice President of India as the chairman of the Rajya Sabha. Okay, so what they are asking you, वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है इंडिया में, ओके, और उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. अब हमें बताइए आप, ठीक है, उसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए आपको. ओके, फर्स्ट वी विल गो इनटू द, अभी एक हैबिट रहता है, एक्चुअली वी कांट प्रेडिक्ट द ऑल द क्वेश्चंस, बट लेट्स सी व्हाई दिस क्वेश्चन केम, बिकॉज़ देयर वाज गोइंग टू बी इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, व्हेन क्वेश्चन पेपर वाज बीइंग सेट, राइट. तो हम बाकी लोगों की तरह भीड़ में लगे रहते हैं कि क्या कौन होगा वाइस प्रेसिडेंट, क्या नहीं होगा, बट एक्चुअली यूपीएससी इज इंटरेस्टेड. Okay, that is political matter. It will cover into the optional syllabus if you have political science or let's say other. But UPSC is testing whether
student is looking how this office is working. It is whether it is working accordance with the mandate of the constitution or not. समझ रहा है सबको? Right? So can you just अभी चेयरमैन तो उन्होंने बता दिया कि जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट. So tell me what is the question? So how you will approach this? कुछ भी मन में आता है बोल दो कि चलो मॉनिटर की तरह मॉनिटर करेंगे, किसी को चुप बैठने को बोलेंगे, किसी को खड़े रहने को बोलेंगे, कुछ भी आपको जो लगता है बोल दीजिए. Sir, first thing we will tell about he is the vice president as well as ex officio chairman of Rajya Sabha. Then how what about his salary is drawn as chairman, ex officio chairman or vice president. We will write that also. Then functions as a chairman means seeing day-to-day functions of the Rajya Sabha and all. We will write those few points. Okay. ठीक है. Can we write the article? Which article specifies the role of the chairman of the Rajya Sabha or related with the vice president of the, I mean, appointment of the vice president? Yes, sir. Yes, we can just. Yes. That is important, so, actually. Okay, very good. Yes. So when you have no idea, okay, start with the constitution. Open the question with the constitution. Right? Do you get my point? Yes, sir. Just आपको लिखना है कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए मान लो कोई 52 आर्टिकल है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कोई तो होगा ना. सो उसे कि लिख लो. चलो अभी मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इट माइट बी 93 होगा, बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द वर्किंग, आई मीन what are the power of the vice president in the Rajya Sabha. So I think 93 तो स्पीकर का है, अभी इनका मे बी 94 होगा. So you can start. This article specifies or discuss about the role of the vice president, Rajya Sabha chairman into the Rajya Sabha. चलो आपको ओपनिंग मिल गया, अभी बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना. ठीक है. So basically when you want to open the introduction, okay, again okay, all can see now the white. Yes, sir. Yes, sir. So we are now discussing about the vice president role, okay, in the Rajya Sabha. So for every question, now it is a template all, but still I will discuss for the very new beginners. Question should have introduction, okay, then body, and then conclusion, okay, for any question, optional, GS, whatever, okay. So here what will be the way? So basically for the polity questions, or let's say if it matches in economy, or let's say any environment question, or in society, okay, you can use your articles, okay. So from where article comes, fundamental rights, DPSP, okay, or other whatever, or let's say fundamental duties also. So you can discuss other, okay, what is I said, I think 94 article or whatever, I don't remember exactly. You can say this article discuss about the role of the Rajya Sabha into the president, vice president into the Rajya Sabha, okay. So अभी बॉडी में क्या आएगा इसका, okay, क्या आएगा बॉडी में? How it functions. बोलो. How it functions. Okay. So बॉडी में क्या आना चाहिए? बेसिकली कोई भी लीजिए, लोकसभा लीजिए, विधानसभा लीजिए, राज्यसभा. व्हाट इज द एम? Okay, people should come, discuss, debate, and build the consensus. Okay, that is the what motto of the Lok Sabha or Rajya Sabha, right?
समझ में आ रहा है आपको? इधर डिबेट तो होना चाहिए ना? Yes, sir. ओके, सो डिबेट तो राज्यसभा का होगा, सो यू कैन से ही अलॉट द टाइम, अलॉट टाइम। ओके, उसके लिए उसके पहले भी आपको पता चाहिए, फर्स्ट ही डिसाइड्स और ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द रूल्स, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द रूल्स in the house, in the house. Do you know court cannot intervene in the court, Supreme Court or High Court, whichever court cannot intervene in the working of the legislative assembly, मतलब विधान सभा और लोकसभा और राज्यसभा. Do you know we have divided court, Supreme Court, High Court, दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ये किसको पता है? Yes, sir. Yes, okay. So why we have done this? So इसके लिए आपको ये पता चाहिए कि ये आप बेसिकली एनसीईआरटी में लर्न करेंगे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हु आर द सॉवरेन इन इंडिया, द पीपल. जो रिप्रेजेंटेटिव है ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, इनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है कि जो उनको चाहे वो बोल सके. इसीलिए हमें किसी को वो कुछ भी बोल सकते हैं हाउस में, हम उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता अनलेस उनका जो मॉनिटर है, स्पीकर या फिर यहाँ पे चेयरमैन, वो एक्शन ले तो सिर्फ. अदरवाइज यू कैनॉट मेक देम पनिशेबल. ये सबको पता है, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, सो अभी ये मैं इधर, इट इज नॉट एक्चुअली इम्पोर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर बेसिक आइडिया. ओके, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, पीपल आर सॉवरेन है, पीपल के बाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव शुड स्पीक व्हाट, फ्रीली, विदाउट फियर. दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइडेड हाई कोर्ट्स. अदरवाइज एनीबडी विल गो टू द कोर्ट्स एंड विल से उसने ऐसे बोला, उस रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसे बोला, ऐसा नहीं होगा ना. दैट इज व्हाई वी हैव मेड द फाइनल इंटरप्रेटर उस हाउस में उधर का ही चेयरमैन होगा या फिर स्पीकर होगा. समझ में आया सबको? So he is the final interpreter of the rule. उसके बाद में he allots times. इसके पहले भी आप जान लीजिए कि he decides the rules of the house. मतलब हर बार पिछले रूल्स भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, but he can also build some news. I mean bring out some rules. समझ में आएगा आपको? So अभी एक कॉमन सेंस है कि he cannot make the partiality with other any political parties, right? He have to give allot times impartially, right? उन्होंने सबके साथ जस्टिस करना चाहिए ना, कितनी भी छोटी पार्टी हो. एक्चुअली दैट एमपी इज रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ इंडिया. मान लो किसी पार्टी का 100 है और किसी पार्टी के 2 ही है एमपी, लेकिन उनको बोलने के लिए टाइम देना चाहिए, राइट? समझ में आएगा आपको? Yes, sir. हाँ, सो एक्चुअली आई कैन गो विथ दिस 2 words only, he allot times or give chance to MP, but you must think in this way that impartiality is important. When you are clear with this idea, okay, this freedom of speech is important, they are representative of the people, that is why they have given highest privileges, or there should be impartiality. Then you don't have to mug up the things, right? और इतना सिलेबस आपको कवर करने में, ध्यान में रखने में आज इजी हो जाएगा. समझ में आएगा आप सबको? Yes, sir. ओके, ये इम्पार्शियलिटी आप नहीं लिखेंगे उधर, लेकिन सिर्फ आप उधर यही लिखेंगे, ये अलॉट्स टाइम. ओके, लिख सकते हैं इम्पार्शियलिटी, बट नॉट नेसेसरी. ठीक है, और क्या करते हैं? हाउ यू हर्ड अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटीज? पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में किसने सुना है? पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है आजकल इंडिया में. यस, यस सर, हो रहा है पार्लियामेंट. डू यू थिंक इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर efficiently working? नो सर. No, that is why we have made this parliamentary committee, where rather than fighting, rather than discussing unnecessary thing, they will discuss specific issue. So अभी जब आप स्टडी करेंगे वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी पे हम बोलेंगे. सो पार्लियामेंट्री कमेटी, मान लो कोई
कोल पे पार्लियामेंट्री कमेटी है, या फिर आजकल जो अपना महंगाई है उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, ओके, या फिर मान लीजिए 5GP बनाई है, राइट, या फिर वुमेन सिक्योरिटी पे. सो देयर विल बी representative of all the political parties, okay, from Lok Sabha and also from the Rajya Sabha, and they will discuss behind the doors. So there they won't fight. यहाँ पे टीवी पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिख रहे हैं इसलिए वो फाइट करते कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, बट they will put genuine opinion. So parliamentary committee में भी he appoints what? He appoints members of all political parties in the parliamentary committee. समझ में आया आपको? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So हाउस में वर्किंग भी नेसेसिटी है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में भी he has to ensure there वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है. अभी when शशि थरूर announced, I think in this week only, now the chairman of this parliamentary committee has been replaced. Earlier it was Shashi Tharoor for the electronics, or let's say information telecommunication parliamentary committee. Now he was replaced. News, I am just connecting this with the news. किसने पढ़ा है? Okay. तो चलो ये दो पॉइंट हो गए अपने, ठीक है. उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं इस आंसर में? What you can write? सबसे मेन बात हम भूल रहे हैं, जो महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या पेंडिंग है? आर्टिकल, सॉरी, शेड्यूल 10 व्हाट? एंटी डिफेक्शन. तो ये सिर्फ विधानसभा में लागू होता है या फिर लोकसभा में भी लागू होता है? टेल मी. राज्यसभा में भी है ना? हाँ, यस सर. यस. सो इसके लास्ट इसका फाइनल एक्शन कौन लेगा? अगर विधानसभा के महाराष्ट्र में जो डिफेक्शन हुआ है उसका फाइनल डिसीजन हु विल टेक? द स्पीकर ऑफ द विधानसभा, राइट. सिमिलरली अगर लोकसभा में डिफेक्शन हो गया तो स्पीकर विल टेक. सिमिलरली राज्यसभा में डिफेक्शन हो गया है तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन. दैट इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट. समझ में आ गया आपको, राइट. सो शी टेक द डिसीजन अबाउट द एंटी डिफेक्शन. और क्या हो गया? ये थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ क्या? he is like umpire, so he has casting vote. casting vote सुना है ना आपने? he cannot vote in first instance. suppose कोई बिल पास हो रहा है और opposition and ruling party vote on that bill, particular bill. अगर कोई बाजू जीत गई तो ठीक है, प्रॉब्लम, जिसके पास मेजोरिटी वहां चले जाएंगे. लेकिन अगर इक्वल वोट, if their two parties have equal votes, okay, किसी बिल पे, तो क्या करेंगे? अभी टाई हो गया तो क्या करेंगे? who will decide? so इस टाइम में अंपायर को वोट करना चाहिए. समझ में आ गया? तो वाइस प्रेसिडेंट will work in this scenario. समझ में आएगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. he do not vote in first instance, okay, but when there will be tie, he will have the power of casting vote. In this way we are ensuring the impartiality. Are you getting? So understand your prelim syllabus. If you have thoroughly read all those things, then you are writing 50% of the mains answer, especially with respect to polity, I will say. वही लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे ज्यादा क्या लिख रहे हैं? ये तो चारों पॉइंट तो वही से आए ना, Yes, sir. और क्या कर सकते हो? स्पेसिफिकली उन्होंने एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पूछा है. और क्या? एंड व्हाट ही विल डू अदर देन दिस? यस, टेल मी. वाइस प्रेसिडेंट के सभी पावर नहीं पूछा है उन्होंने. चेयरमैन के, when he is chairman, what he does, what he do,
उतना ही पूछा है। और क्या आपके मन में आता है? Sir, he is a guardian of right and privileges of the member Very good. of Rajya Sabha. Yes, guardian. Very very good. Privileges, rights and privileges of the members. Okay. So suppose other members are not giving opportunity for the one member to speak. They are interrupting. Then who is the guardian? So यहाँ पे umpire ही होगा ना. So chairman, right? So he has to ensure that member of the house can speak without fear. बाद में अगर ये हो गया तो इसका ही दूसरा पहलू, other side. Okay, this is good thing, but sometimes member do not behave properly. So what he do? He take the action, right? He also take the actions, right? मेंबर को डिबार कर देते हैं ना, वो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए. Expel the member from the house for 4 days, 5 days, etc. समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay, ठीक है. So a question, if you go back last year में, in the 3 bills of the farm laws were passed in the, how they passed in the Rajya Sabha? All ruckus going on. Okay, no discussion was laid, and those 3 bills were passed. Opposition party were not given even opportunity to speak. आपको पता है 3 farm laws कैसे पास हुए थे? Okay, so ये जो सब, whenever you, why I'm saying, whenever you read the newspaper, any news, try to connect with your syllabus. Initially you won't, okay, because आपके पास वो diverse understanding नहीं है. But when you attend the classes or when you read, okay, slowly that understanding will build up. ठीक है? So अभी इसका conclusion क्या करेंगे आप? Conclusion क्या करेंगे? So simply you can say, okay, so Rajya Sabha is the what? Rajya Sabha is the secondary, or let's say advisory house, right? Rajya Sabha का वही रोल है ना. Rajya Sabha created so that there can be continuity in the nation, as well as they can give the advisory opinion. Okay, or क्या? Wiseful opinion on the bills, and to ensure this role of to ensure the debate, discussion, and impartial working of the Rajya Sabha. Role of the chairman is very essential. ऐसा बोल के छोड़ देना का. समझ लो सर्वन्न? Yes, sir. Yes, sir. Whatever you have written, okay, above, just उसका जिस्ट लिख लो conclusion में, बस हो गया. Conclusion में basically what the big idea, okay, debate जो हम पॉलिटी में बोल रहे हैं, या फिर discussion है, या फिर working together है, या फिर nation building है, okay, या फिर removing of the corruption, or let's say achieving 5 trillion economy, okay, or to voice of the people, ऐसे जो बड़े बड़े words है वो आपको conclusion में लाने हैं. ठीक है? So कुछ basic idea आ गया. So whenever Yes, you sir. read the basic textbook, read it. Good thing. It is your foundation. But when you listen the news, okay, try to connect with it so that you won't have to mug up the syllabus. That's what I'm trying to say. Okay. So from the syllabus, from which point this question came? In syllabus, you have the one lecture topic. I think in say first line only discuss the constitution. Okay, historical underpinnings, etc., or salient features, etc. Thereafter, what? अभी salient features में ही आपकी constitution में आ रहा है ना कि we have accepted parliamentary democracy. Parliamentary democracy मतलब क्या है?
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ही बात हो रही है। सेकंड लाइन अगर आप सिलेबस का देखेंगे तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, मतलब फॉर एग्जांपल सेंटर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, चेयरमैन, स्पीकर, इनके वर्किंग के बारे में सेकंड पॉइंट है, हाउ दे आर वर्किंग। ओके, सो एनी डाउट in this question? No, sir. No, sir. And one more thing, when you will do the basic study, you can write the UPSC question. क्योंकि अगर when you will, अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा कि various classes are just giving maybe I will say it is their duty also, but they are giving you all the diverse ideas. Okay, they are going deep into one issue, but UPSC is asking basic questions. Remember it. Whatever we are looking from the 4 to 5 years, एक 10% ही क्वेश्चन आएंगे जो एक आधा स्पेसिफिक इश्यू पे होंगे, लेकिन ये तो बेसिक है ना। ठीक है, चलो और ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे। नाउ देयर वाज वन क्वेश्चन, again it was for 10 markers. Rights of persons, I'm writing this question, with disability Act 2016 remains only a legal document. Without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. अब इसमें क्या लिखेंगे आप, कमेंट, ऐसा है क्वेश्चन, इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए। What you will write? सबको आवाज आ रही है? So question किस पे है? Rights of person with the Disability Act 2016 remains only a legal document without intense sensitization. Without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. Comment. So basic problem क्या है? Why we are not making the lives of the disabled persons, Divyang? Sir, Why we are not making their life, let's say, more easy? Yes, sir, एक डाऊट होता. बोला. सर, मागच्या वर्षी ना न्यूजपेपर मध्ये याच्याच रिगार्डिंग एक हे होतं की जे पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज आहे ना त्यांना युनिफॉर्म सर्व्हिसेस मध्ये हायर पोस्ट साठी पण याच्यासाठी घ्यायचं, ऑफिशियल वर्क साठी. तर ते या कोट करू शकतो का आपण एज अ केस स्टडी म्हणून? हाँ, बट यस यू कैन यूज इट, बट उसके लिए आपको पहले उसका बेसिक जो क्वेश्चन का डिमांड है वो एड्रेस कीजिए, एंड देयर आफ्टर यू कैन राइट दैट एज अ केस. ओके सर. ओके, यू आर मेकिंग आउट गुड पॉइंट, बट पहले यहाँ पे जो पूछा है वो भी लिख ले. यू आर गोइंग डायरेक्टली एट द टॉप लेवल, बट रूट कॉज क्या है वहां पे उन्होंने पूछा है. यस, अभी इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रेक करके क्वेश्चन चलेंगे. चलो इंट्रोडक्शन क्या करेंगे?
अपने अपने यहाँ SDG है, अगर if you don't have articles, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट, बहुत सारी चीजें, या फिर कोई तो रिसेंट एक्ट आया होगा जैसे दिस एक्ट, we can simply write if you don't know the I mean actually in 10 marker question there is a no need of the introduction, but for your understanding I am just bringing out the introduction point, क्योंकि 10 मार्कर में 150 वर्ड्स में आप लिखेंगे कब, क्या 2 पेजेस तो है आपके पास, ठीक है. So you can simply even write that Rights and Person with Disability Act 2016 laid down the duties of the citizens and the, or let's say rights of the disabled persons as well as duty of the state and the citizens. ऐसे भी आप लिख के शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन. एवरीबडी गेट द पॉइंट. उसी को आप सिर्फ you are writing this point, okay, you are writing this point in your own words कि यहाँ यह एक्ट है और इसका मतलब ये है. चलो अभी आप नीचे लिखेंगे. सबको आ रहा है? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अदरवाइज DPSP इज व्हाट, फंडामेंटल राइट्स. तो आपके राइट्स है, अगर उसका वायोलेशन होता है देन यू कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट, ठीक है. बट सपोज अगर बैंक में या फिर आपके स्कूल में, बैंक में मान लो रैंप नहीं है, या फिर लोकल में रैंप नहीं है, लोकल में आप मान लो मेरे पास व्हील चेयर है, कैन आई गो थ्रू द लोकल, मुंबई लोकल? इफ आई एम डिसेबल पर्सन एंड आई यूज द व्हील चेयर, कैन आई गो? वो स्टेप पे चढ़ ही नहीं पाऊंगा ना मैं. बट कैन आई गो टू द कोर्ट दैट मुझे लोकल में से मेरा जॉब है 10 किलोमीटर या फिर 10 स्टेशन के बाद में मुझे नहीं जा, उधर डिब्बा भी है डिसेबल के लिए, बट कैन आई गो टू द कोर्ट दैट मैं नहीं जा पा रहा हूँ? ऑर्डर द गवर्नमेंट्स नहीं, बिकॉज we have not, no, we don't have the fundamental rights for the disabled, specifically for their accessibility. समझ रहा है आपको, right? This question is related to accessibility. Okay, when Prime Minister Modi came in the power, he I mean when this act was passed, he launched one campaign, Accessible India. Have you heard about it? Accessible India. अगर आप बैंक में अगर सिटी में तो जा रहे हैं तो then you are now seeing the ramps, okay, as well as stairs. Earlier there were only stairs, but now you can see the ramps even in schools, so that disabled person can avail the services. अगर आप लिफ्ट में भी जा रहे हैं then you will found their braille लिपि. समझ में आ रहा है आपको? अगर आप ATM में भी जा रहे हैं then you will get there one point audio connection, so that blind people can hear that and operate the ATM. So in India, Accessible India was the campaign. So basic question is about the accessibility. Okay, so यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, पहले वो बोले मुझे, चलो बाद में बाकी सब बोल देते हैं. सो या फंडामेंटल राइट्स तो अभी हम नहीं बोल पा रहे, लेकिन DPSP में कोई प्रोविजन है? यस, आर्टिकल 41. Yes, it sir. says it's a state shall ensure the what DPSP 41 says. Tell me, anyone? क्या बोलता है DPSP? Right to work and the education and public assistance for when you are unemployed, old age or sick, as well as disablement. Maternity benefit कहाँ से आ रहा है आपको? तो आर्टिकल 42 से आ रहा है. वैसे आर्टिकल 41 में आपके यहाँ पे क्या है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. ये आपका DPSP है.
ओके, किस किस को मिलेगा ये? अगर आप ओल्ड एज है, या फिर डिसेबल है, या फिर सिक है, या फिर यू आर सिक. So you can start with the introduction that Article 40, Article 41, in DPSP Article 41 talk about state shall it's a duty of the state to ensure the public assistance for the disabled people. समझ में आ रहा है आपको how to start the questions or how to use your own knowledge in the answers. अगर किसी ने ये आर्टिकल नहीं डाला है देन और आपने डाला है तो ये यू आर गेटिंग हाफ मार्क एक्स्ट्रा. समझ लगा सर्वान? सबको आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी क्वेश्चन पे जाएंगे. व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? व्हाई अर्लियर वी हैव नॉट थॉट अबाउट ब्रिंगिंग सच एक्ट or making our infrastructure usable for the all people? How can we be insensitive that we are denying the our fellow beings? हमारे घर में भी कोई तो हो सकता है ना डिसेबल, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है. Then why we are not making this accessible infrastructure? What is the problem? पैसे का प्रॉब्लम है या फिर लीगल प्रॉब्लम है? अभी लीगल तो डॉक्यूमेंट आ गया, फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है ये एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है. और उन्होंने खुद हिंट दिया है, it remains only a legal document. ये सिर्फ काम का एक्ट बन गया है क्योंकि विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरी. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम आपका कहाँ पे है? एटीट्यूड प्रॉब्लम. या आप GS4 में आपको पढ़ाई, when you will learn this in GS4 attitude. समझ में आएगा आपको? What is the problem? Attitude problem है हमारे यहाँ पे. If suppose bank branch manager have the authority, discretionary power that he can use the fund for the making ramp, or headmaster or principal have the fund and authority to make the ramp or let's say toilet for the disabled person, separate toilets, separate ramps. Okay, he can make it, he can make those provision, but still they are not making. Why? Because we do not think, we are not sensitized enough to make their life easy. यही प्रॉब्लम है ना यहाँ पे. तो आपका जो आंसर का जो जिस्ट है ये एटीट्यूड पे आना चाहिए. एक इंट्रोडक्शन का लाइन हो गया, अब इधर 25 वर्ड्स यहाँ पे खत्म हो गए. उसके बाद में क्या क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? सो आप बोल देंगे यहाँ पे दैट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 make it a mandatory or trying to make India accessible for the person with the disabilities. अभी हम ये क्यों बोल रहे हैं? हम accessible India क्यों बोल रहे हैं? So that they can be brought into the mainstream. They can brought into the mainstream. ठीक है. So इस एक्ट का फीचर क्या है? इस एक्ट का फीचर क्या है? बोले, what is the feature of this act? इस एक्ट का फीचर क्या है? यहाँ पे कुछ तो होगा ना. सो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन भी लाया उनके लिए. अर्लियर इट वाज अराउंड 3%. आई थिंक दे हैव मेड नाउ 4 or 5% आई थिंक. सो ये भी हो गया वहां पे. उसके बाद में क्या हो गया? दिस एक्ट इंक्रीज द रिजर्वेशन. दिस एक्ट मेड इट मैंडेटरी for this act trying to bring the infrastructure accessible. और आप क्या लिखेंगे? ये मेन स्ट्रीम में लाना है. why we are making it accessible? To bring them into the mainstream so that they can avail the education facilities, health facilities, and most important economic opportunities. ये समझ में आ गया आपको? Otherwise, suppose I am engineer but I am disabled and I cannot travel. How could I use my skills? I will remain poor, right? Yes, sir. And if you have data,
then use that data also, that in India we have how much, let's say I don't remember, I think 2% will be disabled person. समझ लगा? So you are showing the gravity and your understanding and your sensitization with respect to the problem of these persons by bringing out this data 2% or whatever, that this much of the all people are facing. अभी आप ये डेटा ऐसे ही नहीं बोलेंगे, इसके लिए कुछ तो रेफरेंस रहेगा ना, कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ने बोला, या फिर आपका सेंसस 2011 उसका ही डेटा है, ऐसा आप उसको कोई तो बैकिंग देंगे. एंड यू आर शोइंग योर ग्रेविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना समझ है. समझ में आ गया? व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम. सो व्हाट इज द नाउ प्रॉब्लम? अभी ये आपने बॉडी के पहले पार्ट में तो ये बोल दिया, दूसरे पार्ट में अभी प्रॉब्लम बोल देंगे. कोई भी क्वेश्चन को 2 में डिवाइड कर दीजिए. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन. समझ में आ गया आपको? अभी प्रॉब्लम में क्या बोलेंगे आप लोग? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो यहाँ पे आपने आपको बोलना है कि एटीट्यूडल प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एटीट्यूड प्रॉब्लम है. ओके, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी अभी भी है. ठीक है, माइंडसेट है, ये भी ब्यूरोक्रेसी का है, एटीट्यूडल प्रॉब्लम है. और सेंसिटिविटी लैकिंग है पब्लिक में, because they have asked not only about the employees of the government, they are also asking about the citizens. Why citizens are not coming forward for demanding these facilities? So sensitivity problem है. ठीक है, प्रॉब्लम ये बोल रहा है. अभी आप इस पे सॉल्यूशन क्या देंगे? Also you can say lack of planning. यहाँ पे सपोज आप बोल सकते हैं अगर आंसर को बढ़ाना है. और क्या what additional problem you can bring out? और क्या प्रॉब्लम है हमारे इस पे? बोलिए. सो बेसिकली आपका GS4 का भी कभी-कभी बेसिकली GS में you can use the information from other paper also. जैसे हमने यहाँ पे सेंसिटिविटी यूज किया, एटीट्यूडल प्रॉब्लम यूज किया. ठीक है, अभी इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या आपको लिखना है? क्वेश्चन ने सिर्फ आपको यही पूछा है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, फिर भी आपको वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन कुछ तो देना पड़ेगा ना. सो सॉल्यूशन क्या है? सो क्या सॉल्यूशन क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो सेंसिटाइजिंग द एम्प्लॉइज एज वेल एज सिटीजन्स. सो सिटीजन्स को आप कैसे करेंगे? सो एजुकेशन, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं मोरल एजुकेशन इन द स्कूल्स कॉलेजेस. बाद में अवेयरनेस आपको आना है. अवेयरनेस, तो अवेयरनेस कैसे लाएंगे? तो अवेयरनेस कैंपेन लिख लेना उसके लिए वर्ड थ्रू. अभी अवेयरनेस नॉर्मल तो टीवी से ला सकते हैं. ठीक है, बाद में कैसा है? टीवी हो गया आपका, ग्राम सभा हो गया. बाद में सोशल मीडिया कभी नहीं भूलना, क्योंकि इट इज वेरी इफेक्टिव. एंड व्हाट, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इसकी ये 3 पॉइंट से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. यस माय फ्रेंड, वी आर कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ओनली 3 पॉइंट्स? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर थिंक कीजिए, अपना सॉल्यूशन हमेशा डाइवर्स होना चाहिए और सबको लेके साथ हमें सॉल्व करना है. ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में दे दिया और बोल दिया चल तू सॉल्व कर क्वेश्चन, तू सॉल्व कर प्रॉब्लम. सो ब्रिंग आउट एनजीओ इन द प्लानिंग प्रोसेस इटसेल्फ, मतलब प्लानिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए लाए, जो which NGOs are working with these people, right? Also give representation to disable, क्योंकि they will bring out their points. उनके लिए representation आना चाहिए. When we are making infrastructure, or let's say in the Panchayat Raj, why can't there be one more seat for the disabled? So इसके लिए आपको कोई कमिटी इसके रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि ARC कमेटी ने क्या बोला है, या फिर कैसे. समझ में आ गया कैसे लिखना है आंसर? सो ये पॉइंट क्या मैंने अगर तो नहीं किए होंगे ना, मतलब अर्लियर यू विल फेस सम हार्डशिप
बट वेन अपने बैक में है कि चलो हमें एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सॉल्यूशन देना है, कि सबको साथ लेके सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि मैं भी चला जाऊं तो भी ये सॉल्यूशन रहना चाहिए। सॉल्यूशन आपका 15-20 साल तक होना चाहिए ना, राइट? अगर एनजीओ वहां पे आके आपने मेंशन किया है कि एनजीओ विल सिट ऑन दिस टेबल व्हेन प्लानिंग इज गोइंग ऑन, ओके, हम 1 महीने में उनकी बात सुनेंगे, डिसेबल पर्सन की, एनजीओ की, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो आपका सॉल्यूशन तो लगातार चलता रहेगा ना 15-20 साल तक, राइट? So this Yes, you sir. will learn in GS2 also, GS4 also. ठीक है? So now you get the idea. It is not necessarily you have the specific information कि आपने एक आर्टिकल पढ़ दिया या आपको आ गया आंसर, या फिर मान लो ये सिलेबस के इस पे पन्ने पे था, आपने पढ़ लिया और आपको आंसर का, ऐसा नहीं है यूपीएससी का मेंस आंसर। इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ डाइवर्स यू कैन थिंक एट दैट मोमेंट, और आपका जो बेसिक रूल्स है, चलो मुझे डाइवर्स दिखना है, मुझे सबको साथ लेके जाना है, कि एनजीओ को भी, क्योंकि मुझे बताइए कोविड में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वजह से हम इंडिया को सेव कर पाते? वी वर्कड विद द एनजीओज, वी वर्क विद द, अभी जो गणपति या फिर नवरात्रि ईद के टाइम पे जो आते हैं लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, पुलिस वर्क्स विद द एनजीओज, और लेट्स से सॉरी मोहल्ला कमिटीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस कम्युनिटीज। सो हमें साथ लेके क्वेश्चन, सो हमारे आजू बाजू हम आंसर दिख रहे हैं हर रोज, एंड दैट यू हैव टू यूज, ओके? सो ट्राई टू बिल्ड दिस वन पॉइंट, ओके? कुछ नया है तो मैं वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बोलूंगा, ट्राइबल के बारे में बोलूंगा, ठीक है? समझ में आएगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. या फिर सोशल मीडिया है, कहीं भी डाल सकते हैं हम। इंफ्रा अवेयरनेस कैंपेन लिखने से अच्छा अवेयरनेस कैंपेन्स एंड रिलाइंग मोर ऑन सोशल मीडिया, ऐसा कुछ तो हम लिख सकते हैं ना, ठीक है? सो अभी तो आप जो पढ़ेंगे तो चलो इट्स नेचुरल, अभी आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे आप, सो ऐसा सोचना है कि अगर मैं क्वेश्चन में 10 पॉइंट लिख रहा हूँ तो मेरे 3 पॉइंट क्या होंगे जो सभी क्वेश्चन में होंगे, लेकिन अलग अलग तरह से होंगे। इट मीन्स यू डोंट हैव टू मग अप, और वहां पे आप चलो एक वुमन के बारे में एक पॉइंट लिखते हैं इस पे, दूसरे क्वेश्चन में ट्राइबल के बारे में लिख लिया, थर्ड में कुछ तो आपने रूरल इंडिया के प्रॉब्लम पे लिखा, क्वेश्चन आया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, लेकिन आपने रूरल पे डाल दिया एक पॉइंट, तो योर आंसर इज गेटिंग डाइवर्स, और आपके पास पॉइंट भी जनरेट हो रहे हैं। सबको समझ में आ गया व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So GS2 में है कि गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, या फिर आपका जो गवर्नेंस में भी सोशल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज पे भी एक पॉइंट है GS2 में, अगर इफ एनीवन हैव द सिलेबस लुक एट इट, ओके? सोशल इश्यूज में मतलब ये सोशल इश्यूज है ना, डिसेबल को कुछ व्हाई दे आर नॉट गेटिंग, अगर अगले साल कुछ तो मैटरनिटी रिलीफ पे आएगा, आके भी गया है 17 और 18 में, आई थिंक क्वेश्चन 16 में आया था शायद, अगले साल और ट्रांसजेंडर पे आएगा, या फिर आपका अभी आप जब पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके? क्वेश्चन बेसिकली केम इन पॉलिटी क्वेश्चन, यू विल फेस द क्वेश्चन फ्रॉम द आरटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, देन तो फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी, इस पे ज्यादा आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? और Yes. आपने you can also use this word in your answer, but by denying them the accessibility of the infrastructure, we are pushing them into the, or we are making their poverty vicious cycle, कि उनको हम बाहर ही नहीं आ पा रहे। अगर डिसेबल है तो वो स्कूल नहीं जा पा रहा, डिसेबल है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हमेशा की तरह गरीब रह रहा है। सो आप कुछ तो डायग्राम बिग्राम बना सकते हैं, ऐसा कुछ तो है। आपने एजुकेशन डिनायल, चलो यहाँ पे इकोनॉमिक डिनायल होगा, और यहाँ पे सिर्फ पॉवर्टी से फिर से चलते रहे, ऐसा कुछ तो डायग्राम बनाएंगे। अभी आज तो चलो और कोई क्वेश्चन में हम देखते हैं डायग्राम का, ठीक है? तो यही देखते चलो। अगर आपको ये पॉवर्टी, ही इज रिमेनिंग इन द विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एजुकेशन डिनायल हो गया उसको, तो उसका इम्पैक्ट हो गया कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रही, ठीक है? उसका इम्पैक्ट आप बोल रहे हैं कि उसका इनकम नहीं है, फिर से उसको एजुकेशन मतलब उसके बच्चों को नहीं बोल रहा, तो ये विशेष साइकिल हो गया ना।
विशियस साइकिल मतलब कंटिन्यूस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, उसको ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज व्हाई वी आर गिविंग द स्कॉलरशिप, वी आर गिविंग द स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द डिसेबल, सो दैट दे, अभी यहाँ पे रिजर्वेशन है तो उसको एजुकेशन पे मिल जाएगा, स्कॉलरशिप है तो उसके बच्चे घर वाले भी छोड़ देंगे, ठीक है। जॉब में रिजर्वेशन है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। अगर हम एक्सेसिबल इंडिया कर रहे हैं तो ही कैन गो टू द जॉब, he can go to the bank, he can ask for the loan, right? समझ आ रहा है आपको? This is not related with the specific question but general understanding, कि आप जो भी क्वेश्चन, अभी आपका अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए कि we are trying to make this vicious cycle of the poverty for the Indian people. पीडीएस में खाना क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेशन और या फिर यहाँ पे हेल्थ भी लिख लीजिए, इसको हमें, डिसएडवांटेज को हमें ब्रेक करना है, इसको एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, क्या अच्छा हेल्थ बनाना है। वैक्सीनेशन, हम व्हाई वी आर ट्राइंग टू कवर है बच्चों का वैक्सीनेशन, व्हाई आरटी एजुकेशन इज देयर, 25% आपको कम फीस में मिल रहा है। हमें पॉवर्टी ब्रेक करने की, हर एक को, अभी चलो इधर ही बोलते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट सुना है बार बार सिलेबस में, अगर इफ यू हैव गॉन टू द सिलेबस, चलो इकोनॉमी में देख लेंगे। इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब क्या, सबको मौका मिलना चाहिए इकोनॉमी में, सब कंट्रीब्यूट भी करेंगे डेवलपमेंट में और सबको मौका भी मिलना चाहिए उसकी डेवलपमेंट से जो बेनिफिट आ रहे हैं। तो हमारा जो मॉल बन रहा है या फिर जो इंडिया का प्रॉस्पेरिटी, उसमें डिसेबल को कुछ मिल रहा है? अगर हम उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं दे रहे तो मॉल में जाने के लिए या फिर मॉल में आके काम करने के लिए, आर यू गेटिंग? इंक्लूसिव गवर्नमेंट का अभी समझ में आ रहा है? गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये बार बार आपको हर नेता के भाषण में मिलेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ। इवन मोदी इज ट्राइंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव गिवन द स्लोगन व्हाट, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ में इनका भी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अभी थोड़ा चलो नेक्स्ट लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हम लिखते हैं थोड़ा। The question was like this, श्रीलंका इंडिया रिलेशन के ऊपर आया था, इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। हैंड राइटिंग थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना? मेरा हैंड राइटिंग तो बहुत खराब है। डिस्कस इंडियाज रोल इन रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका। अभी उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, इन द लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। ये 150 वर्ड्स में आंसर करना है। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस। बोल दीजिए हमें क्या है, बोलो क्या है इंडिया का रोल, इंडियाज रोल इन रिसेंट क्राइसिस। अभी श्रीलंका का न्यूज तो सबने फॉलो किया होगा, राइट? सो क्या था प्रॉब्लम श्रीलंका में? यस प्लीज एवरीवन कंट्रीब्यूट, ऑल आर गेटिंग वॉइस, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके टेल मी नाउ, श्रीलंका का क्या था इश्यू? पड़ोसी का घर जल रहा है तो हम चुप बैठ सकते हैं क्या? हमारा प्रॉब्लम है ऐसा करके, कैन वी कीप क्वाइट? अगर पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो आपके घर में No, भी sir. आएगी ना, राइट? सो इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस दे आर इम्पोर्टेंट। तो सिर्फ पड़ोस में देखना चाहिए या फिर
दूर तक भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर यूरोप में क्राइसिस है तो इंडिया पे इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. How? Yes, you are right. How? Speak out whatever you think. Sir, economical impacts. ओके, इकोनॉमिकली। अभी स्पेसिफिक जाओ। चलो अभी शुरुआती के दौर में ये ठीक है, आप इकोनॉमी बोल दिए या फिर सोसाइटी बोल दिए इम्पैक्ट होगा, लेकिन अभी उसको जो आपके मन में उसको सिर्फ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। कैसे इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा हमारे? वहां से हमारे पास इन्वेस्टमेंट कुछ तो आएगा, हमारे वर्कर वहां पे जाके काम करते हैं, राइट? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यस, वेरी गुड। सो नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट। आपको भी समझ में आएगा कि हमारे सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एज वेल एज आवर इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 130 करोड़ की आबादी को जॉब भी देना जरूरी है ना। इंडिया में तो हर चीज बेची नहीं जा सकती, तो बाहर बेच के कमा लेते हैं हम लोग। चलो वो बाद में हम when we will start the actual international relation we will look at it. So what was the crisis in the Sri Lanka? What was the crisis? किसी ने न्यूज पढ़ रहे थे कि नहीं उस टाइम कि सबने जाके प्रेसिडेंट के पैलेस को ही घेर लिया? they Yes, they sir. captured that palace. Okay, then और क्या क्या हुआ था उस टाइम? खाने की चीजें महंगी हो गई थी और फिर इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। यस, वेरी गुड। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए थे वहां पे। और क्या हुआ था उनके यहाँ? ये सब क्यों हो रहा था? उनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी खत्म हो गया है ना। Yes, sir. इंडिया के पास डॉलर खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बाहर से कैसे आईफोन मंगवाएंगे या फिर बाहर से दवाई कैसे मांगेंगे? सो इनका फॉरेन एक्सचेंज भी खत्म हो रहा था। और सो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहे? उसका बेसिक क्या था? ऐसे प्रॉब्लम हो गए थे कि कुछ तो बेसिक हुआ होगा ना। प्रॉब्लम आने के लिए बेसिक क्या? उनका गवर्नमेंट ने कुछ तो माल फंक्शन किया होगा, गवर्नमेंट वाज नॉट वर्किंग Yes, sir. अप्रोप्रिएटली, लोन लिया था. करप्शन होगा या फिर मिसमैनेजमेंट होगा, राइट? एज वेल एज कोविड के पैंडेमिक का भी उनके ऊपर इम्पैक्ट हो गया। टूरिज्म, श्रीलंका इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म खत्म हो गया। वो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया था उनके यहाँ पे एक चर्च में, और कोविड पैंडेमिक। सो इकोनॉमी में इनकम ही नहीं है, उसके ऊपर गवर्नमेंट, इफ इज नॉट गवर्नमेंट मैनेजिंग वेल देन व्हाट? सो दैट वाज श्रीलंका क्राइसिस। सो बेसिकली इट वाज गवर्नेंस क्राइसिस। ठीक है, श्रीलंका का क्या था मेनली? इट वाज गवर्नेंस क्राइसिस। गवर्नेंस क्राइसिस में आप बोल सकते हैं इकोनॉमी भी था, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हो गया। उसके रीजन बहुत थे कि पैंडेमिक था, टूरिज्म खत्म हो गया था, यहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या करता है? इट नॉट टेक द डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ओके, डिसीजन खुद को लगा वैसे ले लिया, ठीक है। सो वहां पे he was trying to convert Gotabaya all the farming into the organic. So वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी कम हो गया और फूड का प्राइसेस बढ़ गया था श्रीलंका में, राइट? सो ऑल दोज वेर प्रॉब्लम। सो अभी इंडिया का रोल है। Why I'm discussing? Because many of you may not aware of the Sri Lanka problem. That is why I'm just trying to build the scenario. Authoritarian government मतलब क्या? फुल मेजोरिटी था उनके वहाँ पे, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, ठीक है। सो इंडिया का रिलेशंस कैसा है? इंडियाज रोल पूछा है। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में बोलिए। व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू लुक एट द इंडिया श्रीलंका रिलेशंस? सो रिलेशंस 3C लक्ष्य ध्यान में रखना हमेशा। 3C। Which are these 3Cs? So first is 3C नहीं है, हमारा सर 3 T's येते वाटते.
जियोस्ट्रेटेजिक रिलेशंस कैसा है? यस, आई विल कम टू इट. जियोस्ट्रेटेजिक रिलेशंस उस कंट्री के साथ कैसा है? सेकंड वन, जियो इकोनॉमिक रिलेशंस कैसा है हमारा? और थर्ड वन, जियो पॉलिटिकल. मतलब फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में इनका रिलेशन कैसा है, पॉलिटिकल कैसा है, और स्ट्रेटेजिक कैसा है. स्ट्रेटेजिक इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एंड ऑल दैट. ओके, सो इसके पहले आपको समझ में आना चाहिए चाहिए कि व्हाट आई सेड अर्लियर, पड़ोसी का घर अगर जल रहा है तो हम सेफ नहीं. दैट इज व्हाई इंडिया इज इंटरेस्टेड इन द अफगानिस्तान सिक्योरिटी. अफगानिस्तान अगर खुशहाल हो तो हम भी खुशहाल है. ठीक है, नहीं तो टेररिज्म वहां पे बढ़ेगा और इंडिया में दे कैन एक्सपोर्ट द टेररिस्ट इनटू इंडिया एट लेस कॉस्ट. ओके, तो इंडिया के लिए रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई साउथ एशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? जो इंडिया हमारा है, ठीक है, यहाँ उसके लिए साउथ एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई फॉर एनी कंट्री? अब नेबर तो इंपॉर्टेंट हो गया, चलो ये सब कोई भी बता देगा, लेकिन व्हाई इंडिया शुड हैव द रीजनल स्टेबिलिटी? मुझे बोलिए अभी. इंडिया को अगर सुपर पावर तो छोड़ दो, लेकिन ग्रेट पावर तो बनना है ना. तो ग्रेट पावर बनना है हमें, तो हमारे गली के तो लोग हमारे सुने हैं, अदरवाइज आपका वर्ल्ड में बोलबाला कैसा होगा? If your own neighbors are not listening you cannot ensure stability in your neighborhood. How can world will listen to you? How you can claim that give us the representation into the United Nations Security Council और UN में जाके, WTO में जाके आप बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल पाएंगे? आपका जो इंटरेस्ट है आपको बोलने के लिए, you must have the support of all the nations, और उसकी शुरुआत आपके रीजन से होगी. क्योंकि whenever there will be regional stability, it means you can now concentrate on economy. You can now concentrate on economy. आपका सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा कम है. भारत पाकिस्तान का कितना खर्चा हो रहा है सिक्योरिटी पे? वॉर तो नहीं हो रही, लेकिन सिक्योरिटी पे खर्चा कितना है, राइट? You can concentrate on economy. Why Europe fought 2 world war, but now it is a prosperous region. Why? Because there was a regional stability. Why Asian is so prosperous or developing fast? Because there is a regional stability. There is a trade between the two countries. They have negotiations on the security concerns. समझ में आ रहा है आपको? रीजनल स्टेबिलिटी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अगर इंडिया इधर ही फंसा रहा, व्हाट चाइना को वही चाहिए कि इंडिया नेबरहुड में फंसे रहे, और we should not compete with the China at the global level. समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes. So that is why our Prime Minister also, and our basically it was the Gujarat doctrine that we will not. Okay, first we'll go by the. Won't make it complicated. Neighborhood first policy. Neighborhood first policy. किसने सुना है? It means what? Our Prime Minister said we will first think about the neighborhood interest, then other countries' interest. Are you getting? Yes, sir. मतलब अगर if we have the choice, then we will think about the neighbors' interest first. ठीक है. So अभी इंडिया ये अभी हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. So now whatever comes in your mind, just assign those points in these 3 topics. इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में. हमारे इसमें ट्रेड का फर्स्ट थिंक अबाउट द, ये सिंपल होता है. ट्रेड के लिए जरूरत है, राइट? उसके बाद में क्या है? फिशरमैन इशू है, फिशरमैन है, और क्या है आपका? टूरिज्म है, सर्विसेज है. ट्रेड में आएगा, लेकिन फिर भी आपका ट्रेड सर्विसेज है, और क्या आएगा? आवर रिलेशंस है. पॉलिटिकल आप बोल सकते हैं कि नेबर कंट्री है आपका, ठीक है. हम सार्क में वी आर कोलैबोरेटिंग सार्क, या फिर आप बोल सकते हैं कि
बिम्स्टेक में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं या फिर यूएनएससी में कर रहे हैं, राइट। स्ट्रैटेजिक में क्या है, सो चाइना का पॉलिसी है मैरीटाइम, बीआरआई का ही मैरीटाइम एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया करना है उनको। मैरीटाइम सिल्क रोड है, ठीक है, एक्चुअली एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया करना है उनको, मतलब इंडिया के साइड में पोर्ट कैप्चर कर रहे हैं, बिकॉज चाइना वांट टू डोमिनेट आल्सो इंडियन ओशन, मैरीटाइम सिल्क रूट ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यू कैन से राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड, व्हाई, बिकॉज आपका वही स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वहां पे, तमिल माइनॉरिटी। अगर उनका, if we do not care about this Tamil minority, then our politicians from the Tamil Nadu state will agitate, right? So ये strategy concern है टेररिज्म के रिलेटेड, और टेररिज्म भी है अभी, क्योंकि सोशल मीडिया से वहां से भी रिक्रूट कर सकते हैं ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी और यहाँ पे हो सकता है अपना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये इंडिया का स्लोगन है, ओपन पैसिफिक इंडो, सॉरी बहुत है। India talk about this free and open Pacific. Why? Unlike China, we think all should have opportunity on the ocean to develop their economy. There should be free trade. There should be free sea lines for communication, for exporting your goods, etc. Free and open Indo-Pacific. अभी US और इंडिया का ये we talk on these lines. Okay, so ये सभी हो गया आपको बताने के लिए कि on which lines we can cooperate with the Sri Lanka. अभी फिर से क्वेश्चन पे आइए, how you will start now. अभी आपको इंडिया श्रीलंका रिलेशन भी पता चल गया, उनका क्राइसिस भी पता चल गया। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, what how you will start with this question, India's role in recent crisis in Sri Lanka. So then you can simply write that India has always followed neighborhood first policy. ऐसा आप कुछ तो बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, और you can say what, और आपके मन में क्या आता है, and what you can, Gujarat doctrine भी है, okay, Gujarat was the prime minister in the 1996. He has laid down one point that whenever India will collaborate with the neighbors, we will not seek reciprocity, मतलब उनके पास से हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए ऐसा सोच के हम उनकी मदद नहीं करेंगे। It will be unidirectional, क्योंकि इंडिया का जो साइज है उस big brother what our neighbors call us, and that is why we should take the initiative even though they do not give us back some benefits, because we have to make the trust first. जाने दो, वो बाद में देखेंगे। अभी इंडिया का रोल क्या क्या किया हमने। सो फर्स्ट ये जस्ट राइट डाउन वन थिंग, यहाँ पे आप नाउ जस्ट राइट डाउन क्या, दैट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लिखना आप, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया हैज ऑलवेज फॉलो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसके बाद में आप बॉडी पे आ जाना, व्हाट वाज अ क्राइसिस, तो क्राइसिस लिख लेना, क्राइसिस क्या था आपका। सो देयर वाज अ गवर्नेंस क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, लिख लेना जो हमने बोला है। एंड दे वर फेसिंग व्हाट, फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, एज वेल एज व्हाट उनका फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रहा था, या फिर उसको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप लोग, दिस गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, बोथ। सो व्हाट इंडिया सेड, डिड इंडिया इंटरवीन, जो हमने पिछली व्हेन राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, वी सेंड द फोर्सेस इनटू द श्रीलंका, बट नाउ वी डू नॉट सेंड द फोर्सेस, इवन अमेरिका हैज नाउ स्टॉप सेंडिंग द फोर्सेस ऑन द अदर नेशंस। कोई भी सिटीजन नहीं चाहता कि हमारे सोल्जर दूसरे की कंट्री में जाके उनके प्रॉब्लम के लिए मर जाए। सो इंडिया नॉट
sending the troops, as well as India is what India. अभी India का statement क्या था? India said कि all political parties of the Sri Lanka should collaboratively solve this problem, and India will assist if they want India's assistance. ऐसा नहीं कि हमने बोला कि हमारा ही सुनो, because India has following the policy of non-intervention. Because when other countries intervene, some actors of the Sri Lanka, or let's say any country, they will use this point that India is intervening against India's. So हमारा image वहाँ पे tarnish हो जाएगा, हमारा soft power खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसीलिए India said that there should be political solution. और इंडिया ने क्या बोला था? By the Sri Lankans themselves. और क्या किया था हमने? We gave them what? Letter of credit दिया था. नाम सुना है? Letter of credit मतलब you are trading with them, okay, but you are not asking for immediate payment. Letter of credit समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. क्योंकि उनके पास तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, डॉलर नहीं है, बट स्टिल वी आर ensuring that this country can trade. We also give them food. हमने फूड भेजा, वैक्सीन भेजे. अभी मैं because it before I think 20 दिन तो हो गए मेंस के, so I don't remember the exact words कितना फूड का दिया था. I think लेटर ऑफ क्रेडिट 2 बार दिया था, $400 मिलियन ऐसा कुछ तो 2 बार दिया था, मतलब 800 तो दे दिया था. ठीक है, और क्या दिया था? वैक्सीन दे दिया. और क्या दिया था हमने? दे वर आस्किंग फॉर फ्यूल्स, तो हमने फ्यूल से भी थोड़ा बहुत मदद किया था उनको. और क्या किया था हमने? Sir, we were trying to, yes, grains and essential medicine. yes, vaccine medicine that covered. Also ये हमारे what we tried from our side, but what we did at global level. So we supported at IMF and other level that we should help the Sri Lanka. US का consensus बनाना हो, IMF के द्वारा श्रीलंका को कोई मदद दिलानी हो. So we ensured our support there. अगर इंडिया ये नहीं करता तो क्या होता? श्रीलंका वैसे भी चाइना के हाथ में चला गया थोड़ा बहुत. Remember, whenever our neighbor want concession from India, they play China card. कि आपने अगर हमें मदद नहीं की, concession नहीं दिया तो हम चाइना से ले लेंगे. So that is why to prevent China from Indian Ocean in our neighborhood, prevent China's influence, we have to respond to the crisis in our neighborhood. समझ में आ गया? Yes. So that is why we are working with the USA etc. to ensure help to the Sri Lanka. और हमने क्या किया था? India's role. So you can now conclude this question that this role will ensure the long-lasting solution of this. अभी conclusion में ऐसे लिख सकते हैं आप way forward करके कि या फिर India behaved as a responsible neighbor and ensured conclusion by the Sri Lankan people. ठीक है, क्योंकि if you have looked, India has always said our one stance that in any country there should be solution by those people only. अफगानिस्तान में भी हम यही बोल रहे थे कि अफगानिस्तान people should have the solution. So यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि India behaved responsibly and insist on political solutions crisis. ठीक है, these steps will not only ensure the survival of the Sri Lanka but also prevent China's influence. ठीक है, ये that is important. China's influence आपको लिखना पड़ेगा. And what you will say? India can also work with the Sri Lanka for more regional trade to ensure the economic stability.
क्योंकि सबका रूट वही है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. यस. Yes, sir. ओके, ठीक है. So now we are studying the international relations. That is why I'm saying. So at the same around all the Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, India, Sri Lanka, all got the independence around the same. I think around 1947, 1948 ऐसे ही आपको मिल गया है. 3-4 साल के डिफरेंस में. But why we are seeing the governance problem in those countries, political instability. So that it means it is not important to have nation. I mean आपको फ्रीडम मिल गया, नेशन आपका सॉवरेनिटी है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास ने डिलीवर भी करना चाहिए. यहाँ पे गवर्नेंस क्राइसिस मतलब क्या, आपका पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुन के आए लोग हैं, ये नहीं अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, दे आर नॉट डिलीवरिंग. अगर महंगाई बढ़ता चलेगा तो लोग आएंगे ना रास्ते पे. अगर जॉब नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? समझ में आएगा आपको? So in neighborhood, we are seeing the delivery of the state delivery is failing. State deliver नहीं कर पा रहे जो बेनिफिट उनको सिटीजन को देने चाहिए. और आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिटीजन्स आर डिमांडिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम देयर स्टेट्स. पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा. सो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता चला. भाई नेबरहुड इज इम्पोर्टेंट. व्हाट इंडिया पोजीशन क्या है कि किसी हाल में इंटरवेंशन करना नहीं है, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है इंडियन नेबरहुड में. बाद में क्या, लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन हमें खोजना है हर बार नेबर्स के साथ. यस, सबको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में? थोड़ा बहुत. Yes, sir. फ्री इंडो पैसिफिक, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलो ठीक है. So next we will now look at the GS3 problems, questions. So अभी तक किसको कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन, डाउट्स कुछ पूछिए. If anyone have any doubt? Yes, anyone have doubts? Yes, किसको डाउट है कुछ? सर इकॉनॉमीला कोणती बुक रेफर करायची आहे? ओके, ठीक आहे. नाही ठीक आहे, त्याच्यावर बोलू आपण. एक थांबा थोडं. मी ह्याच्या आत्ता जे आपण जेवढं बोललोय ना, तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला थोडं काय डाऊट आहे का विचारतो मी. सर या क्वेश्चनचं कन्क्लुजन कसं आहे? सो वी कैन से ओके इंडियाज रोल के बारे में कि इंडिया इज बिहेविंग responsibly and trying for political solution by Sri Lankans themselves. ऐसा ये तो लाइन में आना चाहिए. ठीक है. As well as we can say and India is helping them economically as well as at the global levels through, or let's say through global powers or in IMF etc. ऐसे लिख सकते हैं. और आप otherwise you can also write these steps will ensure the, let's say easing the political crisis in the Sri Lanka. और ऐसा हाँ ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंडिया शुड वे फॉरवर्ड में ऐसा कि इंडिया शुड कोलैबोरेट मोर विद द global powers at IMF, at United Nations and WTO and try to bring more, try to solve this crisis at early possible to for ensuring regional stability. ऐसे भी आप लिख सकते हैं conclusion, whatever you can think. ठीक है. और कुछ प्रॉब्लम है इस whatever we discussed in GS2? Yes. GS2 जो 3 क्वेश्चन हमने देखे पॉलिटी में से ही देखा, या बाद में सोशल इश्यू एंड गवर्नेंस पे देखा और इंटरनेशनल रिलेशंस पे देखा है. एनी
Yes. Okay, now we will look at the GS3. So economy के questions actually economy में बहुत diverse हो गया. Someone asked about the book, okay, but if you have look at the prelims questions, okay, conceptual पे बहुत आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि पहले आते थे 4-5 साल पहले कि they were asking about your schemes etc. But now they are asking about conceptual कि how inflation works or how let's say fiscal deficit comes और budget में कुछ तो problem कैसे आता है या फिर ऐसा. Also they are testing your basic demand supply principle etc. So book कोई भी हो आपका बेसिक प्रिंसिपल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. ओके और इकोनॉमी पढ़ते समय जो आप भी पढ़ेंगे संबोधि एकेडमी में कोई भी पढ़ाने दो, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके साथ आपको करंट हैपनिंग से जोड़ना पड़ेगा, तभी आप you can I mean you can ensure the clear understanding of those basic principles and you can retain that information for long time in your brain. जैसे कि if you have gone through the today's newspaper, what is the main headline? That inflation is high. It has crossed 7.41. Okay. So इसके ऊपर अगर आप जाएंगे प्रीलिम्स के या फिर इकोनॉमी का, तो इन्फ्लेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरबीआई. 4 to 6% में उन्होंने दे हैव टू स्टॉप इट, बट नाउ इट इज क्रॉसिंग. सो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, दैट यू वी हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप. ओके सो बुक्स कोई भी हो, सर विल गिव यू द लिस्ट. ओके हु आस्क्ड दैट क्वेश्चन? सर विल गिव यू द लिस्ट. ओके एंड क्लास में भी आपका बहुत सारा नोट्स भी तैयार हो जाएगा उसके लिए. ओके so a question was there. What are the major challenges of ठीक है चलो ये भी लिखते हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Tell me what are the challenges in India? What are the challenges? Sir, hoarding. Okay. Next. Next challenge. PDS का challenges क्या है? Only many Effective people कैसे those who बनाना है? don't have their ration cards, though they belong to the poor community, they don't get the benefits. Okay, okay, ठीक है. चलो inclusion exclusion problem what you are saying. चलो. So we will say these are the challenges. What is your hoarding? Inclusion exclusion problem. ठीक है और Sir, next, financial burdens. on the government. On चलो ऐसा लगता है फूड सब्सिडी, ये भी प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट कितना देता बैठेगा ना, ये भी है फूड सब्सिडी. ठीक है और पीडीएस है लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या क्या है और क्या क्या? ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वही हो गया, और क्या क्या बोल सकते हैं? मोर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट उसको कैसे बनाना है? यस और क्या है इसमें?
क्या बोल सकते हैं, बोलिए। करप्शन बोल सकते हैं ना, चैलेंज, ब्लैक मनी, करप्शन, बात। और क्या बोल सकते हैं? सर करप्शन और ब्लैक मनी एक ही इसमें हो गया ना? हाँ यस, एक ही इसमें हो सकता है, जैसा आई रोट दैट। ठीक है, चलो एक में लिखते हैं। और बोलिए आप। न्यूट्रिशन फोकस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड बोल सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम है? Because we are giving only rice and wheat, those are calorie focused, but we are not giving nutritious food such as, let's say, millets, cereals, डाई, जो हम बोलते हैं दाल वगैरह, हम कुछ कोई नहीं दे रहे हैं ना ज्यादा, जिससे प्रोटीन मिलता है। ओके, सो हमारी भूख तो मिट जा रही है, लेकिन वी आर नॉट न्यूट्रिशियसली हेल्थी पीपल, जिसको बोलते हैं हिडन हंगर। ठीक है, और क्या चैलेंजेस है? ग्रीवांस रिड्रेसल भी हो सकता है ना, मेन तो यही चैलेंज है, सुनवाई कोई नहीं करता, इसलिए तो सभी प्रॉब्लम परसिस्टेंट है। सो ये बाद में होगा, अब इसके लिए इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे आप? यस, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? शो टेल मी हाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाई पीडीएस इज इम्पोर्टेंट, और लेट्स से व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, ऐसा कुछ जो आपको दिखाना है कि यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जामिनर को बताना है। कैसे बोलेंगे आप इंट्रोडक्शन? यू कैन से इंडिया हंगर इंडेक्स, रिसेंट हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट आता है, हंगर इंडेक्स में इंडिया कितना है? 101, India's ranking is 101. So in this way you are telling the gravity of the situation in India, कि we have how much, I mean how severe the problem of hunger in India. Hello, hunger index सुना है सबने नाम? Yes, sir. Okay, so you can start with the reports also, कि recent hunger index show hunger index rank India at 101th place. Okay, आप ऐसे बोल सकते हैं। Okay, next one, Article 47 talk about the nutrition of the people of India. It is the state shall ensure the healthy nourishment of the citizens, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर you can talk about the SDG, Sustainable Development Goals. इसमें कौन सा गोल है? गोल नंबर 2, it talks about no hunger. पहला तो पॉवर्टी है, दूसरा गोल है हंगर के बारे में। So you can start with this, that SDG 2 to talk about the eliminating the hunger from the world by 2030. Okay, ऐसा आप, so इंट्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, you can use anyone, जो DPSP है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये आपके कहाँ भी काम में आ सकते हैं, कंक्लूजन में भी और इंट्रोडक्शन में। Anyone have any other idea about of the introduction? Yes, or should we go forward? Sir, in recent times, the National Food Security Act, which was वो भी extended आप बोल सकते हैं। Yes. for COVID ration beneficiaries. Okay, okay. हाँ, initiative, you are talking about initiative. So आप बोल सकते हैं कि Food Security Act 2013 aim for 70% of the population have accessibility for the food, ऐसे आप बोल सकते ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी इज, बॉडी में अब आप क्या लिखेंगे? बॉडी में चैलेंजेस तो लिख लें।
So you can make the passage or point wise, or you can make such diagrams. Okay, to save your time, you have to make the combination so that your paper can look lucrative. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, आपने challenges बोल दे. You can also make the point 1, 2, 3, etc. Whichever way you feel the convenient. ठीक है? अभी एक पन्ना तो इसमें चला गया. अभी दूसरे पन्ने में बोल दीजिए solutions. क्या होगा solution? How to make it effective and transparent. बोलिए. If you have the data, then also mention here data that we are spending 2 lakh crore, etc. For example, if you know, if you don't know, then it's okay. समझ रहा है आपको? Grievance addressal. Now it is any person can say grievance addressal किसी भी Indian government हो रहा है. But you have to talk about that ERC second ERC2 said, or let's say any parliamentary committee recently has said. So you can give it a backing. Don't, as far as possible, don't put point as it is. उसके लिए कुछ तो backing दीजिए. या फिर यहाँ पे शांतारा, I don't remember the exact name. शांता कुमार committee was there. शांता कुमार बहुत old one है. शांता कुमार कमेटी आई थिंक 2014 का है या फिर 16-15 का. बट दैट कमेटी हैज पुट डाउन सम चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन आल्सो. समझ में आ रहा है आपको? सो बैकिंग देना है अपना, जो भी सब पॉइंट है उसको सब्सटेंशिएट करना है कुछ लिख के. ठीक है. सो नेक्स्ट वन, अभी इसको इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसा बनाना है. सो अभी मैंने बोल दिया जो शांता कुमार कमेटी है उसी के हैज गिवन सम पॉइंट्स, ऐसे आप लिख सकते हैं. और शांता कुमार कमेटी हैज एडवाइज सम पॉइंट्स, हैव गिवन सम सॉल्यूशन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं. सो बोलिए क्या क्या आपके मन में आता है हाउ टू मेक इफेक्टिव. बोला. So first of all, we have to stop that corruption and black marketing. Yes, but how? So by right. yes sir, रेड मार के उनके ऊपर. इफ हमें कुछ सोर्सेस मिलते कि यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यहाँ से जा रहा है, तो वहाँ पे हम अपने ऑफिशियल्स भेज के वहाँ पे रेड करके वो उनको अरेस्ट करके उसे स्टॉप कर सकते हैं. और नेक्स्ट एनीवन अदर पॉइंट प्लीज कंट्रीब्यूट. अभी ये तो पीडीएस का खाना 70% लोग खाते, मतलब हमारे इसमें तो 70% तो लोग खा ही रहे हैं. चलो आपको पता होना चाहिए. हाउ टू मेक इट. सो डीबीटी आपका एक्चुअली चैलेंजेस में आना चाहिए था. ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि आधार तो डीबीटी आपको सबको पता है ना. जैम ट्रिनिटी सबने सुना है. जैम ट्रिनिटी मतलब क्या है? जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल. सो इसके आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा. व्हेन यू गिव दैट ओटीपी देन दैट सर्विस विल बी अवेलेबल टू यू एंड आपके मोबाइल पे. मतलब अभी पहले पीडीएस कैसा था? अर्लियर पीपल वेयर यूज्ड टू गो टू द किराना या दैट पीडीएस शॉप एंड दे पेड द सब्सिडाइज्ड प्राइस. 2 रुपए चावल के दे दिए और ले लिया चावल. अभी क्या होता है? दे पे द होल प्राइस, और जो सब्सिडाइज्ड अमाउंट है 30 रुपीज, 28 रुपीज, वॉट एवर, दैट कम बैक टू देयर अकाउंट. So effectively they are only paying 2 rupees. But to avoid the corruption, अभी ब्लैक मार्केटिंग करना है तो उसको भी 30 रुपए से बेचना पड़ेगा. ठीक है. जैम ट्रिनिटी तो सबका पता है ना. डीबीटी कैसे हो रहा है? सिलेंडर का पैसा कैसे आता है घर में? सिलेंडर पे डीबीटी है ना. मैसेज होते ना सर्वांना घरात. ऑल आर अवेयर अबाउट द डीबीटी. हेलो. सगळ्यांना सिलेंडर तर येते माहिती आहे ना. बेसिकली समजा सिलेंडरची 1500 रुपये किंमत आहे. देन यू आर पेइंग 50 रुपये दिस मच अमाउंट टू डिलिव्हरी पर्सन.
and government is now giving you, let's say, 500 rupees as a cashback. I am using this word, local words, cashback, but actually it is subsidized amount. So this is a DBT, direct benefit transfer. So using more DBT, लेकिन DBT हम तो 5 साल से बना रहे, यूज कर रहे, फिर भी क्वेश्चन आ गया है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना फिर भी. So here that you can add more problems. What you can add here, that connectivity problem, I mean online connectivity. क्योंकि अभी आधार पे तो चला गया ना सभी पीडीएस, ये प्रॉब्लम हो गया है. खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, देयर you cannot, you do not have online connectivity, so ऑपरेशन ही ले पा रहे हैं. नेक्स्ट वन आपका थंब इम्प्रेशन काम नहीं करता है. थंब इम्प्रेशन किसका काम नहीं करता है? दोज हु आर डूइंग द कैजुअल, लेट्स से हेवी लेबर, मतलब जो माइनिंग में काम कर रहे हैं, उनके थंब इम्प्रेशन वर्क नहीं करते. या फिर जो अपने किसान है, खेती में काम कर रहे हैं, उनका थंब इम्प्रेशन डू नॉट गेट डिटेक्टेड इजीली. सो अभी डिटेक्ट नहीं होगा तो आधार से लिंक नहीं होगा तो मिले रेशन ही नहीं मिल रहा. So there was one theory by that, I don't remember the economist, but he come to the, he shows that because of other many poor people are getting deprived. So ये भी challenges है नया. ठीक है, तो अभी किसको सॉल्व कैसे करेंगे? मेकिंग डीबीटी मोर इफेक्टिव ऐसा लिख लेना. ठीक है, आपका अभी क्या ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए, ऑनलाइन कनेक्टिविटी. तो उसके लिए स्कीम है अपना आदर्श, आई थिंक डिजिटल इंडिया से हम कर रहे हैं. डिजिटल इंडिया से वी आर इंश्योरिंग वाईफाई एट द स्कूल, पंचायत या फिर गवर्नमेंट ऑफिस से, वहां तक हम ले जा रहे हैं, सो दैट ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी का इश्यू खत्म हो जाए फॉर अवेलिंग एनी सर्विसेज. और क्या बोल सकते हैं, समवन सेड होल्डिंग एंड करप्शन प्रॉब्लम, राइट, टू मेकिंग रेड एक्सेट्रा. सो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन. ओके, सो आप इसके लिए जीपीएस बना सकते हैं. एक्चुअली दिस जीपीएस ट्रक पे जीपीएस, छत्तीसगढ़ government officials use these GPS devices on the trucks, and that is why they were able to track the food from initial point to the last point up to the shop owner, up to the PDS shop. So अभी लीकेज तो खत्म हो गया. यूज जीपीएस फॉर मॉनिटरिंग फूड मूवमेंट और ट्रक मूवमेंट. ठीक है, सो आप अपने मन से नहीं लिख रहे, जो वॉट एवर केसेस यू आर सीइंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ये आप वही लिख रहे हैं. और क्या लिख सकते हैं? ग्रीवांस रिडर्सल के बारे में क्या लिख सकते हैं आप? ग्राम सभा को इंश्योर कीजिए, ग्राम सभा. ठीक है, सोशल ऑडिट सुना है आप लोगों ने? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबके सामने उसकी सुनवाई होती है. एंड so that now officials are being made accountable to the people of India. Earlier they were only accountable to the representative or to the higher officials. Now they have to answer the common man in the Gram Sabha. So effective हो गया. Involve NGO, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, they cannot come forward for putting their complaint. NGO यहाँ पे काम कर सकता है. ठीक है, देन ग्रीवांस रिड्रेसल इफेक्टिव चाहिए. तो इसके लिए आप अदर अल्टरनेटिव्स फॉर आधार, जो आपने प्रॉब्लम लिखे उसी के आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं, बाकी ज्यादा कुछ इधर दिमाग ही नहीं चलाना. ठीक है, अदर अल्टरनेटिव्स फॉर आधार. बाद में ऐसा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना है, तो आप बोल सकते हैं रीजनल या फिर बोथ. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम करना. भी पंजाब से ही आ रहा है, पंजाब से ही एमपी में व्हीट आ रहा है. रादर देन दिस, इफ वी प्रोक्योर व्हीट फ्रॉम द मध्य प्रदेश इटसेल्फ, देन वी विल सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो रीजनल प्रोक्योरमेंट आप बोल सकते हैं, as well as आप बोल सकते हैं. Now many let's say many families do not like this PDS ration. They do not purchase it, or suppose they purchase then they sell out.
So we have to solve this also, this problem also. So let's say regional taste habits और फूड हैबिट, लेट्स से इसको बोल दीजिए कंसिडरेशन, फूड हैबिट इनको भी हमें कंसिडर करना है उनको. अगर साउथ इंडियन, व्हाई ही डोंट लाइक द व्हीट, उसको मोर गिव हिम मोर राइस. If north, or let's say involve millets here, same, make it nutritious, bring more protein food. Then you can say here pulses and millets, etc. Yes, everybody understood? Abhi, ask yourself which point you didn't knew. You knew all the points, but it's question about bringing those points and making the answer. DBT तो सबको पता था, चलो ऑनलाइन से खत्म हो जाता है करप्शन. सबको पता था रीजनल, हमें चावल अच्छे नहीं लगते हैं, वी वांट बाजरी, ज्वारी, एक्सेट्रा. ठीक है, everybody knew that we should have alternative grievance redressal system for the poor people. GPS हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, so you knew all the things. As you will study, okay, you will come to know the various points. और जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपको आंसर लिखना आ जाएगा. उसमें कुछ बड़ी बात नहीं कि कोई तो एक रॉकेट साइंस बना रहे हैं, ये सिंपल चीजें हमें लिखनी है. So इसका conclusion we can say conclusion of you can say, for let's say PDS is important for making demographic dividend capable of inclusive growth. डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता है, जो यूथ है जो काम कर सकते हैं उनको कैपेबल बनाया. अभी कैपेबिलिटी अप्रोच हम बाद में देखेंगे. Basically what government is doing, government is giving you food, making you capable. So आप ऐसे कुछ बना सकते हैं. और you can say PDS, effective PDS will ensure harnessing demographic dividend for 5 trillion economy. ऐसे कुछ लिख के छोड़ देना है conclusion. Yes. Why I'm saying 5 trillion? Because Prime Minister has said we will become within 2 years 5 trillion economy. That is our aim. Demographic dividend, because we have more younger people and they can work, but we have to ensure their health for working. ठीक है? So आपने यहाँ वहाँ से जो पढ़ा है उससे आप बना लेना आंसर. Everybody get this answer? Yes, sir. Yes, sir. Any other doubt? न्यूज़पेपर पढ़ते समय अभी चीजें आएंगी आपके. So you अभी I think before 1 week government now government started more food. जो अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट से जो पीडीएस से मिल रहा है खाना वो तो है फूड ग्रेन्स, बट during pandemic government started giving more food to the people extra on this act. पीडीएस जो रेगुलर उससे भी ज्यादा दे रहे हैं. And before one week government now made a decision to continue it up to December, I think, because महंगाई बढ़ रही है ना. Suppose I am earning 1,000 rupees, let's say 5,000 rupees, and what if food becomes costly, I will consume less. Yes, that is why government have not stopped that more ration which was started during the pandemic. Even though pandemic has gone, I mean, at least we are seeing in the less number of cases economic activity has started, but still government is giving PDS to target the inflation as well as to target the purchasing power, or let's say purchasing ability of the people. समझ लगा सर्वाना how to connect all those points? Even if Yes, you are sir. not writing in this answer, why it is necessary to connect the all point for your better understanding. आपको समझ में आ जाएंगे एक चीज. Okay, next. और एक क्वेश्चन हम लेते हैं.
चलो ये ठीक है, ये ले लें, easy for you all you to understand. Elaborate the scope and food processing industry in India. ये question आ गया. I think it is repeated. So questions are getting repeated. So food industry के बारे में उसका scope क्या है, मतलब what उसकी संभावना क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, ये आपको बताना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंडिया में. बोलिए स्कोप क्या क्या होगा इसका इम्पोर्टेंट, वाई फूड इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है या फिर प्रेजेंस में उसको अपॉर्चुनिटी है क्या. हाउ मेनी ऑफ यू ईट वेफर्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर ईट द पैकेजिंग फूड. मुंबई में राइस प्रोड्यूस होता है क्या, गांव से आता है ना. यस यस टेल मी. तो इसका इंट्रोडक्शन चलो इंट्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे. इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे आप. सो नाउ यू हैव नॉट read anything, so let me tell you. So various reports are there, Niti Aayog report or let's say government various committees etc. So they have said that food processing industry have this much potential. Let's say it can employ let's say 1.2 crore people in India it employs, or let's say they may have said it contribute for the 12% of the Indian economy, or let's say 20% of the agriculture GDP etc. So this kind of line you can say in the introduction that food processing industry contributes let's say 10% of GDP, ऐसा आप बोल सकते हैं, या फिर 1.2 करोड़ लोगों को जॉब दे दे, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं. एंड यू कैन स्टार्ट विद द आंसर इंट्रोडक्शन लिख के. ठीक है. Also you can use your 2 points here. You can say India have 101 rank at the hunger index and we have surplus food which get rotten. So आप ऐसा anomaly कुछ तो दिखा सकते हैं कि 101 rank और food hunger index आप ऐसा बोल सकते हो. और यहाँ पे we can say that we have rotten food. हमारे जो वेयर हाउसेस है फूड सिक्योरिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जो वहां पे खाना सड़ जाता है, बट और एक तरफ वी हैव सरप्लस फूड एंड ऑन अदर साइड वी आर नॉट फीडिंग आवर पॉपुलेशन. सो you are showing the importance of the food industry because we are not allowing this food being let get sorted, let get processed and reach to these people. समझ सर्वाना. Otherwise you can also start with this that food processing industry, इसका definition लिख लीजिए. Simple. Food processing industry means what? Let's say any process of value addition in food supply chain. A simple definition है. अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, just define that word in food supply chain or from or let's say or from farm to fork. fork मतलब चमचा. फार्मर से लेके कस्टमर तक, कंज्यूमर तक. अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है सिंपली डिफाइन. पिछले क्वेश्चन में भी आप बोल सकते हैं कि फूड हंगर इंडेक्स मतलब क्या है या फिर क्या है, या फिर फूड हंगर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, पीडीएस क्या रहता है. पीडीएस इज अ मैकेनिज्म फॉर सब्सिडाइज्ड फूड डिलीवरी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. हो गया. आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो
20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। अगर आप डिवाइड किया, चलो 4-5 में हम डेफिनेशन लिखेंगे, 3 में आर्टिकल लिखेंगे, 2 में एसडीजी लिखेंगे, 4 में रिपोर्ट लिखेंगे। सो यू वोंट फील इनसिक्योर अबाउट द इंट्रोडक्शन। सबको समझ में आ गया डेफिनेशन कैसे इस्तेमाल करना है? Yes, sir. ठीक है, अभी स्कोप इसका बता दीजिए, व्हाट विल बी द स्कोप? स्कोप क्या होगा इसका? टेल मी। थिंक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? उसका फ्यूचर ब्राइट है या फिर उसको कुछ फ्यूचर नहीं इंडिया में? बोलिए। सर फूड प्रोसेसिंग का फ्यूचर ब्राइट है। ओके, ब्राइट है। हाउ? Sir, because nowadays, as we can see, many times it happens that certain fruit or vegetable is what you can say produced on a large scale. Okay. So many other times farmers throw it. So rather than throwing it, they can make jams, pickles, etc., and sell them. Helps in storage, logistic product. Yes, definition ये भी चलेगा। Scope means processed foods लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इंडिया में? Yes, sir. Sir, because of urbanization. उसको बोलिए। Sir, because of urbanization. वेरी गुड, अभी आ गए आप पॉइंट पे, बोलिए। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, किसी ने पहले बोला था कि एग्रेरियन इकोनॉमी, या बोल सकते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी बोल सकते हैं, या फिर फूड अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं। फूड मतलब सरप्लस, चलो फूड अवेलेबिलिटी बोलते हैं। चलो, और वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आप इसको और स्पेसिफिकली इन रूरल इंडिया बोल सकते हैं आप, जहाँ पे जॉब क्राइसिस है। वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं? वर्किंग वुमन, मुंबई में अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं भी, woman has less time, right? So we prepare the ready food, or let's say some processed food, जैसे कि सब्जी कटी हुई हो, या फिर ठीक ठाक से अगर डिमार्ट से खाना ला रहे हैं तो उसको फिर से उसको क्लीन ना करना पड़े, जिससे टाइम से हो जाए। भाई अगर हम we will prefer packaged curd rather than making it at our home to save time। और क्या है स्कोप हमारा? लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, यूथ है। यूथ क्या है? यूथ तो फूड प्रोसेसिंग ज्यादा खाना चाहता है। सो इसका मीनिंग ये कि है अर्बनाइजेशन, फूड सिक्योरिटी, फूड स्टाइल एक्सेट्रा, कि वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रेडीमेड फूड्स, डिमांड इज शिफ्टिंग, परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है। अगर इफ यू वांट टू ऐड, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट पॉइंट, पर स्टिल चलेगा परचेसिंग पावर। और क्या बोल सकते हैं? लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट हो रहा है अपना, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, व्हाटएवर, देखिए मार्केट अभी कनेक्ट हो रहा है फार्मर्स को, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो स्कोप समझ में आ गया। इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है? एट वन पॉइंट फूड अवेलेबल है, एम्प्लॉय अवेलेबल है, और एट नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पे अर्बनाइजेशन और इसके वजह से डिमांड भी है। सो सप्लाई का भी इश्यू नहीं है और डिमांड का भी नहीं। समझ में आ गया स्कोप, राइट? Yes, sir. Any other point anyone want to add here? चलो थिंक कीजिए, सिर्फ
इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं कि नहीं हमारा फूड बासमती राइस कितना? Yes, we are the first largest producer of various commodities. I don't know exact number, but rice, wheat, milk, इसमें हम first और second largest है, right? Basmati rice we export. Also we export various spices, etc. etc. ठीक है? To serve international market. So आपको जो पता है ना, उसको सिर्फ आप अगर point नहीं मिल रहा है तो try to just expand, go just one step. चलो नेशनल हो गया रीजनल मार्केट के बारे में बोलते हैं, रूरल मार्केट के बारे में बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बोलते हैं, वुमेन्स के बारे में बोलते हैं. ठीक है, ऐसा आपको सिर्फ एक बात सोचना और एक पॉइंट लेके आना. इट इज इन योर माइंड, जस्ट यू हैव टू ओपन दैट व्हाट वी कैन से दैट टॉपिक. आपको वो सिर्फ कनेक्शन बिठाना है कि ये स्टेक होल्डर है और हमें एक स्टेक होल्डर से एक पॉइंट लाना है. तो इंटरनेशनल मार्केट आप बोल सकते हैं, टू सर्व इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, आप यहाँ भी बोल सकते हैं कि इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हाइजीन एक्सेट्रा. ये भी आप बोल सकते हैं अगर इंटरनेशनल के बारे में आ गए. WTO, इंडिया इज WTO मेंबर. WTO मेंबर से आपको क्या फायदा है? यू कैन ट्रेड इजीली. यस, यू कैन ट्रेड इजीली. आप यहाँ पे बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो व्हाट एवर यू थिंक, ऐसा नहीं कि यही पॉइंट आना चाहिए. किसी को अलग, किसी को ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में आया, किसी को नहीं आया, किसी ने लाइफस्टाइल लिख लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? हर एक का आंसर तो एक जैसा नहीं होगा ना. यस, सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो again I am repeating the same statement. In whichever format you can write these points, point wise, paragraph. I won't say go for paragraph in GS. Either go with the diagram or point wise. Okay, चलो स्कोप तो हो गया. ठीक है, अभी एम्प्लॉयमेंट भी होगा. चलो सिग्निफिकेंस में बोल दो. अभी सिग्निफिकेंस बोल दो मुझे. नाउ ये ओके, ठीक है. इसको डिलीट कैसे करना है? ठीक है, अभी सिग्निफिकेंस बोल दो मुझे. सिग्निफिकेंस, यस टेल मी. इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब. व्हाई फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग इज इम्पोर्टेंट इंडिया, टू इंडिया. अगर ये नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? या फिर इस व्हाट वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया by developing our food industry, food processing industry. Tell me, think in this way. Whatever you said ना, उसी को आपको सर्व करना है इम्पोर्टेंस के माध्यम से. इसका रूरल के लिए इम्पोर्टेंस है. In India, Yes, sir. we have yes. Yes. In India, Sir, perishable goods directly processed as early as possible. very good, very good point. Perishable goods. So now I said, if you have data, then give. So you can say in India around let's say 14%. अभी हर न्यूज़पेपर में, हर रिपोर्ट में अलग अलग आएगा डेटा. For 50% of the food stage. And if you now save this food, save this waste, then what will happen? Farmer will get more income. Your food cost will get lower. Food become cheap, etc. etc. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट पेरिशेबल गुड्स हो गया. नेक्स्ट, पॉवर्टी इंडिया में कौन से सेक्टर में जाते हैं? सर्विस सेक्टर में जो काम करे उनको पॉवर्टी ज्यादा है. IT वालों के, जो मैनेजमेंट में है, उन दे आर फेसिंग पॉवर्टी, और मैन्युफैक्चरर्स आर
employees facing poverty or farmers are facing more poverty? Who are more people? Where is the more unemployment? Yes, come with the answers. Farmers. Okay, so what kind of, so we can say more income to farmers, more income to farmers, you can say. Next one, in rural India there is a seasonal employment. क्योंकि अगर फार्मिंग 4 महीने हो गए तो 8 महीने क्या करना है, चुप बैठना है, नहीं तो माइग्रेशन करके सिटी में आना है 8 महीने के काम करने के लिए, फिर जाना है बारिश में. सो यू कैन से ऑल ईयर एम्प्लॉयमेंट हियर, ऑल ईयर एम्प्लॉयमेंट होगा. अभी इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी जब इकोनॉमी पढ़ेंगे दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना है. मतलब क्या, चारों भाई फार्मिंग पे लग रहे हैं जबकि एक भाई काम कर सकता है फार्मिंग का. सो 3 भाई फूड प्रोसेसिंग करेंगे, एक भाई बाजार में आके बेचेगा अर्बन इंडिया में. सो इन दिस वे वी आर मेकिंग क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट. दोज हु आर नॉट एडिंग, चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बाद में देखेंगे. एम्प्लॉयमेंट तो हो गया. अभी और बोलिए, अभी एम्प्लॉयमेंट को और रूरल इंडिया को और एक एस्पेक्ट बड़ा उसको और एक स्टेप आगे लेके जाइए. ये किसको ज्यादा फायदा करेगा? फूड प्रोसेसिंग के जॉब किसको ज्यादा फायदा करते हैं? लिज्जत पापड़ आपका कौन बनाता है? यस, यस, लिज्जत पापड़ कौन बनाता है? मोर सेल्स विच लीड टू इंक्रीज इन इनकम. यस, वेरी गुड. यस, वुमेन्स के बारे में बोलिए ना, हु विल गेट मोर बेनिफिट? घर का काम कर दिया 4 घंटे में, बाकी के 4 घंटे शी कैन हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग चटनी और लेट्स से cleaning the food and packaging, or she can make papad, or she can make the, let's say, various kinds of herbal foods, etc., herbal medicines. So women will have the more opportunity, and that is why in India we are emphasizing on the food industry. It will solve farmers, it will help rural India, as well as women will have more benefit, more opportunity of the employment. समझ लो का? Yes, sir. रूरल इंडिया में, ठीक है, एज वेल एज अभी ये तीनों पॉइंट ये के फिर भी आई एम डन. इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. एक कंप्यूटर आ गया, उसने 10 लोगों का काम कर दिया, सो ओनली 1 person इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. बट इफ यू वांट पापड़, लिज्जत पापड़, दो इट इज गिविंग लेस वेजेस, बट it giving 10 employees, 10 women employees work. 10 women can work in the liज्जत papad making and run their houses, and naturally women will spend extra income on the good food, on children's educations. They will save them income for crisis management. समझ लगा सर्वांना? It will be extra income in the hands of the woman, which will solve many problems. चांगल्या शाळेत पाठवतात ना आई, शहरात तुम्ही बघत असाल, those women who are working, let's say, even low paid wages job, let's say such as housekeeping, or let's say some canteen work, etc., but they spend on their children's education. So labor intensive industry, it means it will create more jobs. Food, cloth, food industry, as well as shoe making. Such kinds of jobs will, such kinds of industry produce more jobs. Lekin if you bring the coal plant, or let's say computer plant or IT industry, it will produce less job, though they are giving you more income, more revenue. But हमको हर हाथ को काम देना है ना, 1.36 करोड़ पीपल है हम लोग, सबको काम देना है ना. चलो और क्या बोल सकते हैं आप? Exporting the food will lead to earn more income. Yes, very good. So you can say foreign exchange. Very good. अभी आप एक एक पॉइंट जा रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. और
लेस वेस्टेज हो गया, सभी हो गया। और इसको ही बोल देते हैं कि रिड्यूस और चीप फूड ग्रेन फूड प्राइसेस। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन विल स्लो डाउन। ये की पॉइंट है, आई एम जस्ट राइटिंग है, इन्फ्लेशन विल रिड्यूस, क्योंकि आपका अभी क्या डिमांड सप्लाई मैच कर रहा है ना, क्योंकि आप यू आर स्टोरिंग फूड बाय मेकिंग सम प्रोसेसिंग ऑन इट। If you are storing, let's say, onion and the potato, etc., etc. So what we have for that purpose? So we have, let's say, earlier it was total only, it was now total. कुछ तो scheme है government का. In this scheme, government is focusing on 12, I think 22 food kind of 22 food items such as onions, then your potato, some vegetables, etc. So because these food we see more fluctuations, and government want to reduce that fluctuation by food processing, etc., or connecting the market, etc. और क्या बोल सकते हैं, ट्राइबल को भी लाइए कभी कभी, ट्राइबल के बारे में स्पेशल फूड्स, हेल्दी फूड्स, which let's say honey, or let's say medicinal purpose, herbal foods, etc. So they will get more money, right? Tribal will also get benefit. समझ लगा सर्वांना? Yes, sir. आणखी क्या हो शकतं? So one more point. Now organic will get boost. क्योंकि as income is growing, we are becoming more health conscious. We are demanding organic food. Organic farming will get promoted. Ultimately, what we will use less fertilizers. We will have ecological benefits also. समझ लगा? Yes, sir. ठीक है. So these are the significance. मैं as a conclusion क्या करा? Any other point anyone have? Any other problem? Sorry, any other point? ठीक है. As a conclusion कैसा करायला था? Conclusion कैसा करा? So same you can say, okay, for bringing development to rural India and let's say increasing productivity of agriculture, we need food processing industry, ऐसा आप बोल सकते हैं. ठीक है. In this way you can conclude it. And also before conclusion you can also talk about the steps taken by the government of India, such as I said there is one total scheme, okay, or let's say food processing के लिए maybe government have brought, let's say there is one scheme Sampada, okay, where government is building infrastructure, let's say storage houses, cold chain, Kisan train is there. So these also you can mention here before conclusion. These are four you can make, ensure, talk about steps taken by the government and then conclude it. समझ लगा? Yes, sir. किसान ट्रेन ऐकले ना? कोल्ड चेन आपल्याकडे पाहिजे, एसी वाले बोगीज असतात किंवा कांदे वगैरे साठवायला आपल्याकडे हवेशीर, you should have some air space so that perishable food do not get wastage early, etc., etc. ठीक आहे. पुढचा पॉइंट घेऊ आपण. पुढचा क्वेश्चन. ठीक आहे. त्यानंतर ओके, तर एक सायन्सचा क्वेश्चन घेऊ. So there was one point. Question is big. I will just write the gist. Question was, in 2021 December 21, we
वी में आई मीन वी मतलब नासा. वेब स्पेस टेक्स्ट. Okay. Let me read out the question, then I will write the main words only because we have less time now. So question was like this. On 21st December 2021, James Webb Space Telescope has been much in the news since then. What are its unique features which make it superior to its predecessor space telescope? What are the key goals of this mission? And what potential benefit does it hold for the human race? So इन्होंने पूछा कि इसके यूनिक फीचर्स क्या है. यूनिक फीचर्स क्या है जो उससे मोर प्रेडेसर मतलब जो उसके पहले जो टेलीस्कोप्स का उससे ज्यादा इसके पास यूनिक फीचर्स क्या है. देयर आफ्टर मतलब सुपीरियर कैसा है, ये प्रेडेसर से ज्यादा सुपीरियर कैसा है. ये दो क्वेश्चन, एक ये पूछा है, एक दो. एंड थर्ड वन इज द की गोल्स उसके क्या है इस मिशन के. और लास्ट वन हाउ ह्यूमैनिटी विल गेट बेनिफिट. ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कैसा होगा. So in science and tech, okay, question will be based on the basic questions. There are, let's say, 7 to 8 areas are there. From those questions comes, okay. Even for the prelims, they have now stopped asking the your basic science. Let's say physics, chemistry, biology, etc. They are now even topics, words are like this: science and its technology and its application. So are they asking about the application part even in your prelims? And when it comes to mains, they are asking the India's position in those sectors. How, what is the basic principle of that technology? Let's say robotics, or let's say nanotechnology, or let's say nuclear energy, or let's say your solar energy, okay? Or let's say gene editing. What is the basic mechanism it, and what how we can get benefit out of it for our economy or for our nation. So in the same way, James Webb Space Telescope, it was in the news, and the question, it was predicted, and the question was asked. So how many of you have heard about it? Fast, we have only 5 minutes. सांगा किती जणांनी ऐकलं होतं ह्याच्याबद्दल. जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप. So earlier it was Hubble. I think it was sent in 2000 or 2002. Okay, and whatever we have the images of the space, okay, different galaxies, etc., they were from the Hubble technology, Hubble telescope. And after so many years now NASA, Canadian space technology, and now just in science and technology, you won't have more introduction part, etc. Directly write what? Yes, very good. Directly writes what are the technical features. क्योंकि science में हम इधर उधर का नहीं ले सकते. We have to directly answer the question. Okay, so यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में let's say इसके unique features लिखेंगे. Okay, it's successor of Hubble, ऐसा लिख लिया, Hubble telescope. Okay. So now you can here make the table कि इसका हबल का और जेम्स वेब का क्या है डिफरेंस, क्योंकि आपको यूनिक फीचर्स सुपीरियरिटी दिखाना है. So it was revolving around Earth only. It was revolving around Earth like this, and it was taking the pictures. But James Webb was placed as a Lagrangian points. Those are the points between the Earth and the Sun, where both gravitational forces get cancelled, and so that your telescope remains stable here. Okay, so these are 5 points, and we have placed this James Webb at L2. ये आपने बोल दिया. Next one you can say there is a more clarity. ठीक है, more clarity in their pictures because कैसे है यहाँ पे only infrared, I think they use infrared, but here sub-infrared light was also
sub infra red light was also utilized. So आपका image आपका अच्छा आएगा. Basically it is not capturing the direct image, it is taking the many parameters and then processing it. So you can also write that point. ठीक है. Thereafter और क्या क्या पता है आपको? So बेसिक यही फीचर आपको लिखने हैं कि अभी टेक्निकल है, आपको थोड़ा पता चाहिए. So again when it comes to science and technology, छोटी छोटी चीजें पढ़े लेकिन उस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, बिकॉज हार्डली 3 क्वेश्चंस विल कम और 4. सो छोटी छोटी चीजें तो नहीं पूछेंगे, जैसे नैनो साइंस है या फिर जीन एडिटिंग है, उसका इंडिया में कैसे इम्पैक्ट होगा, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको पता रहना चाहिए कि वो बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें पैरामीटर्स क्या है. जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन आया था, और हाउ इंडिया विल गेट बेनिफिट. और जो ऐसा स्पेस वेब जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी है, टेलीस्कोप है, दिस वाज अ लीप फॉरवर्ड फॉर द ह्यूमैनिटी. 20-25 साल के बाद हमने एक और नया टेलीस्कोप भेजा है, which is giving us clarity of the earth, let's say space. So it was major event, so you have to have focus on those events. Okay, सब छोटे छोटे क्वेश्चन पे नहीं तो नासा ऐसे हर 4 दिन में एक स्पेस एक लॉन्च कर रहा है, वो आपको नहीं देखना है. जो बड़ा वाला शिफ्ट है वही आपको देखना है ज्यादा. ठीक है. और इसमें क्या आएगा, ये तो हो गया फीचर्स. लुक एट अदर फीचर्स आल्सो. उसमें जो मिरर है या फिर बड़ा मिरर है, या फिर इट कैन सेव फ्रॉम द सन हीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप है वो ले सकते हैं, या फिर इसका टाइम ज्यादा है वगैरह वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट दे हैव आस्क्ड, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द मिशंस. तो गोल्स मिशंस के क्या थे, व्हाट वर द गोल्स. सो गोल्स क्या क्या थे. सो गोल्स वही था कि हाउ इट विल स्टडी द एक्सपांडिंग यूनिवर्स. मतलब एक गैलेक्सी कैसा, जो गैलेक्सी भी एक्सपांड करे ना. You must have heard about that our universe is expanding, our galaxies means आकाशगंगा, it is also expanding. ठीक है. शॉर्ट लिस्ट हैबिटेबल पॉइंट्स. यस, वेरी गुड. सो इसके पहले एक था कि ओके, आई विल राइट फर्स्ट वन हियर, दैट इट विल स्टडी द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बिग बैंग. इट विल स्टडी बिग बैंग, ब्लैक होल्स एक्सेट्रा. देन हाउ आवर आकाशगंगास आर created and expanding, how they are created and expanding. Then it will study the many habitual points, और कहाँ पे life possible है. ठीक है. Then creation of the star, basically how we reached up to this point, how big bang happened, how galaxies are formed, how they are expanding, how stars are formed, and how life have been created. ये सब वो, these are the goals of this telescope. ठीक है. ये सिंपल है. इसके बारे में और क्या लिखना है आपको. इसके बारे में how it will benefit the humanity. So you can say it will improve our little understanding. सब तो ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना पॉसिबल है. सो राइट लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स for, let's say, for improved theories and policies, या फिर for improved theories and space missions, ऐसा बोल देना आप. ठीक है. कंक्लूजन करके छोड़ देना. बेनिफिट यही है और यही कंक्लूजन. ठीक है. सर, everybody understood this question? Yes, sir. Anyone have this? जो लास्ट के हमने 3 क्वेश्चन देखे, ये GS3 के थे. 2 were from the economy and 1 from the science. Okay. Also there is one section from the environment and, let's say, biodiversity. So it is similar to geography. Because of shortage of time we could not cover it, but
from my side, I try to give you the, let's say, some understanding. Hope many of you have got this. Okay, if have any doubt, ask. Otherwise, we will close for today. Anyone have doubt? No, sir. No, sir. Okay. Yes, anyone? कुणाला काही प्रश्न असतील आजच्या सेशन मध्ये तर विचारा. आजच्या सेशनचा उद्देश शिकवणे हा नव्हता, तर जे काही आता रिसेंटली मेन्स झालेली आहे, श्री सरांनी आताच ती मेन्स दिलेली आहे, रिसेंट मेन्स दिलेली आहे त्यांनी. याच्या आधी पण त्यांनी UPSC च्या मेन्स दिलेल्या आहेत. ओके, अँड ही इज हॅव्हिंग व्हेरी गुड अथॉरिटी ओव्हर subjects. So deliberately we arrange this session to understand the approaches of mains examination, right? म्हणजे तुमच्यापैकी बऱ्याचशा स्टुडंट्सला मला माहिती आहे की आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलंच आहे ना. आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस एंटायर सिलेबस विथ यू, and in fact we discuss questions, essay writing and so many things, but this is another, like we need to consider the approaches of the other experts also with respect to preparation. And that's why yesterday Dr. Roderick's former Indian Defense State Service officer, he delivered ethics lecture in front of you, and today I have organized a lecture by Shree. Okay, so I hope you understood all the things. काही लोक अगदीच ज्यांना अजून सुरुवातच केली नाही, म्हणजे ज्यांनी आतून बेसिक NCERTs पण वाचलेले नाही, त्यांना थोडस नाही कळलं असेल, पण डोंट वरी अबाउट दॅट, बिकॉज इन रेग्युलर सेशन्स वी कंडक्ट we discuss all the things, okay, in detail, right? And in those detailed discussions we teach you all the subjects. Okay, so हे थोडंसं एक हायर लेवलचं सेशन होतं, पण श्रीनी खूप चांगल्या पद्धतीने ते सगळं समजावून सांगितलं तुम्हाला. पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे, श्रीलंकेचा इश्यू आहे, आणि त्यानंतर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीची डेव्हलपमेंट आहे, कॉन्स्टिट्यूशनचा गव्हर्नरचा इश्यू वगैरे आहे. Okay, so many more things he discussed with you very thoroughly. Okay, so I hope you understood you understood properly. कोणाला काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता श्री सरांना. काय प्रश्न आहे कोणाला? कोणाला काही प्रश्न आहे का आता सध्याच्या सेशन साठी? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक आहे, मग आपण इथेच थांबूया, and we shall meet as per the schedule. Okay, for next sessions. तिला पकड एक मिनिट. Hello, one more point. Even for it is, I will say, whatever I am saying is from my experience. Okay, even for, let's say, one mains answer. Okay, if you do not gather, let's say, whole answer, all the points, if you are at this stage, if you are coming with the 1 or 2 points, it's okay, because you are in the process. But don't stop that thinking process. Now please go and read today's newspaper and have the habit. आपको एक भी point अरे आज inflation का आया था, ठीक है, या फिर let's say even if it is political news, you have to brought one point only. Okay, ये मेरे आंसर राइटिंग में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसे लिख पाएगा, ठीक है. Don't now think about अरे मेरा आंसर ऐसे टॉपर के साथ ऐसा होना चाहिए, 10 पॉइंट होने चाहिए. नो, ग्रेजुअली ये आपका हैबिट आएगा, बेबी स्टेप लेके जाना है. 1 पॉइंट बस है, 2 पॉइंट आया, चलो ठीक है, ठीक है. जो हैबिट आप अभी बनाएंगे, आपका वो खाने जैसा प्रैक्टिस हो जाएगा, रादर देन थिंकिंग अबाउट आंसर राइटिंग बाद में लिखना. अभी लिखे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन सोचना तो शुरू करिए, ठीक है. थैंक यू. Yes, that is very correct thing, and we
whenever I discuss answer writing or approaches with respect to preparation, I emphasize on this thing that one should develop thinking process. Thought process is very much important with respect to answer writing at mains level examination and giving answers at the interview also, right? So you need to develop your thinking process right from the very beginning. Okay, so thank you very much, Shree, for your very intellectual session. Very nice and thorough session with respect to perspective and approaches towards mains writing. And thanks a lot, dear students. Okay, good night. Thank you.